If you have ever stared at your CA books thinking, how am I supposed to conquer all of this? Then you are at the right place today. I am Sadaf Zariwala, the Managing Committee member of WICASA, of WIRC, of ICAI, and it is my immense pleasure to host this seminar for you alongside my equally enthusiastic co-host, Krish Bharushani. Whether you are just starting out or knee-deep into the revisions, this is a place where you crack the code to CA success. Now, I know a lot of you are probably wondering, is this the day that I get the secret sauce to success? Well, we are not talking about just passing the exams, we are talking about how to ace them. Okay. So grab your notebooks, your pens, and most importantly, your motivation, because today we have some stars joining us. These are people who have not only faced the CA exams, but have successfully cleared it. But before we dive into all the strategies and motivation, let's start with something that's a true reflection of our CA journey. Yeah, so the better way to set the tone is with ICAI motto song. येष सुप्तेषु जागृति येष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. The ICAI motto really sums up everything we need on this journey, from dedication, perseverance, and excellence. So with that powerful thought in mind, let's start with today's proceedings. We have with us the chairman of WICASA WIRC, CA Jitendra Saglani, a dynamic and a visionary leader. He plays a pivotal role in the holistic development of students through not just academic initiatives, but also extracurricular initiatives. His dedication to empowering students and fostering a strong professional community has inspired many across the region. Today, he is here not just to share his invaluable insights, but also to carve a path to success. Please join me in welcoming CA Jitendra Saglani. Thank you, MOCs, Sadaf and Krish. Chairman of the biggest region of the country. Friends, with your attention, please. So, Chairman of the biggest region of the country, CA Ketan Sayya sir, who is attending, who is actually marking his presence virtually. He's busy in his engagements today. Vice Chairman, CA Piyush Chandak sir, will be joining shortly with us. In absentia, CA Jeena Savla ma'am, the Secretary of WIRC. With us, present physically here, CA Dr. Fenish Shah, the Treasurer of WIRC. And students of Team WICASA. The list is big and they are very close to my heart, so I'll not name each and every one of them.
The branches who have actually been here jointly hosting this program. So I just wish to name the branches. It's Ahmedabad branch, Pune branch, Nagpur branch, Nanded branch, Bhuj, and Bhavnagar branch. And I hope I didn't miss any branch here. So these branches and their chairpersons, WICASA chairpersons, along with that, the speakers who have committed us for their time today. So starting with the student sitting before you all, the ranker here, CA, rather she is to be CA, Jahanvi. Apart from Jahanvi, we have Prasanna Surana, and we have two more speakers who will be connecting with us, who already are there in the this meeting room with us, CA Vijay Thakkar ji from Bhuj and CA Bhushan Gosar ji from Nashik. So I think this is one such program wherein you all students are here physically as well as virtually, and I welcome you all with, I think, thunderous applause. I think we should welcome each and every one of them. So friends, it is rightly said, and I think you'll agree to this. Success is what? Success is 90% hard work, 10% attitude, or the other way around? 90% हार्ड वर्क ऐसा बोलते हैं, सीए में हम लोग हार्ड वर्क ही करते देखते हैं, बट आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड. इट्स मोर ऑफ एटीट्यूड, हार्ड वर्क, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज your faith in the Almighty, because prayers also matter a lot. तो आप जो पढ़ेंगे वो आपके सामने आना बहुत जरूरी है. This is one of the remarkable programs that we have. We have named it differently. We usually used to have this program as how to face CA exams, but we are not talking about facing it. We are talking about acing it. And we have wonderful speakers today. They will be covering various areas, right from say how to write the exams. So she will be talking, Jahanvi will be talking about tips and trips to say approach the papers. Beyond that, Prasanna will again be talking about CA finals, and he'll be covering that area. But we have one mentor session, which is actually a motivational session by Vijay Thakkar ji, who is actually joining all the way from Bhuj, and he'll be actually motivating you all, and he'll be actually covering how to stay motivated during the exams, and also the evaluation part, because that is a key part. So आप लिख तो सब आते हैं, but marks नहीं आते हैं. So why those marks get reduced or you don't get those marks is something would be covered by Bhushan ji. So this is a power pack session, and I hope the people who have joined virtually as well as physically have a great learning. Regarding the future programs, we have a conference, a seminar on AI, which is decoding AI, happening on 26th. So all of you who are not attempting exam this time in this month of May definitely can register and can come. Fenil sir was talking about AI, and he was showing me that he is connected through AI in this meeting room as well. So he's sitting before us, but also connected through AI. So those kind of tips and trips, I think, would be covered in that particular program, full day program AI. And I wish you all a very happy learning and see you all in more such programs in future. Thank you so much. Thank you so much, Jitendra sir, for your inspiring words. I'm sure we are feeling already motivated. Moving ahead, we have with us the treasurer of WIRC of ICAI, CA Fenil Shah. His dedication to empowering students and fostering a strong professional community has inspired many across the region. I now request him to share a few words. Thank you. So thank you, Sadaf and Krish, for giving a wonderful start and a brief introduction. And before I move ahead, the speakers, respected speakers for the for the evening, that is CA Jitendra Thakkar ji and CA Bhushan Gosar ji. Probably this is one kind of event where we are having a conglomeration of both type of speakers, that is, you can say students also and members also. So from student side, Jahanvi Mehta, AIR 4, and we wish that it's of intermediate rank. So in final, you get something higher than that. Prasanna ji, who secured 11th rank in intermediate and 16th rank at the CA final. Also, the most humble and dynamic chairman of the largest region, that is CA Ketan Sayya sir.
CA Jitendra Sanglani sir leading the vibrant WICASA from the front, and the team WICASA WIRC present here in person, and also the other branches who are joining virtually, starting from Ahmedabad, Nagpur, Nanded, Bhavnagar, Bhuj, Pune. So on behalf of WIRC, again, I take an immense pleasure to welcome you all. Like, I'll not speak more because otherwise if I'll speak more on this, then the speakers would think that now what to speak and what not. So I'll keep it restricted to few things. Reason like I'm also connected with mentoring the students, and almost daily I spend 2 to 3 hours in mentoring the students. So if I share my experience, then normally what happens that day before exam, even 2 hours before exam, and 2 to 3 hours after the exam, I frequently get certain calls of some mistakes which are being done by students. So I'll pinpoint few points out of that. And when I get those calls, I never feel like that privileged कि चलो यार मुझे इतने calls आए. मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि ये जो calls जो exam के पहले और बाद में जो आते हैं, वो obviously near to zero हो जाने चाहिए, because वो जो mistakes हम commit करते हैं, वो कभी reversible होती नहीं है. Like if I tell of a very small mistakes, then many times student write wrong roll number. Now you might think that this is not possible, but yes, this is possible. Second very important mistake which you must not commit is when you are tick marking the MCQs, right? Many times we have a habit of tick marking that, right? Or you can say coloring that with the help of pencil. Then if you do so, then it will not be checked. You need to compulsorily do it with your pen, may it be black or may it be blue, and most preferably the black, because it's OCR. So it will help the system to recognize it in a faster manner. Moreover, in MCQ, when you are tick marking and you have selected the wrong circle, then there is no other option, right? Then you cannot cancel it, means you cannot go for the another change. So such kind of things happens, and you need to take care that you don't do these things when the examinations are on. Moreover, you should always ensure that you carry your admit card along with the photo ID proof. Moreover, ensure that you reach 45 minutes before the examination center so that you're not stressed. Now, 3 important tips. That is, many times it happens that you write 1 question, right? For example, if 6 questions are there and you are required to write 5 out of that, let us say you are attempting question 1, right? Then all 5 questions you attempt, and then still you have time. And now you think that I want to attempt question number 6. So what kind of silly mistake or probably unknown mistake a student makes is, student will select जो 5 क्वेश्चन उसने लिखे उसमें से स्टूडेंट क्या करेगा, 6ठा क्वेश्चन भी लिखेगा, and then he will cross it out, any 1 question out of the first 5. In my humble opinion, this should not be done. Let all 6 questions be answered. What will happen is all 6 questions will be evaluated, and very importantly, those 5 questions where you are getting the highest marks or more number of marks will be taken into final calculation. So whenever you appear anything in answer sheet, then your work should be always to answer, not to cross out anything. And also many times it happens that you answer question 1, then now you think that it is wrong, you cross it out, then you again re-answer question 1, thinking that the second time you attempted is the right one. But probably many times it happens that the first one which you cancelled was the right, and the second one which you think is right was wrong. So again, carry a simple fundamental. You are there to create an exam, not to destruct an exam. हमारा काम एक ही होना चाहिए, लिखना. शायद से एक का क्वेश्चन आप 2 बार लिख सकते हो, but don't cross it out any of the question. Second important thing is, many times it may happen that you get a wrong question or a question with an error. Now, as a student, you may feel that, oh, we are unlucky. In my personal opinion, you are lucky. Why? Because ever you get a question which has a mistake, do make an attempt to at least answer, even though you know that it's wrong. Because in such a scenario, marks are granted not for answering correct, but marks are granted for answering. So even though the question is wrong, remember, you are appearing as a student, right? You are not going to test the question paper. So galat to galat, but appear zarur karna. And the last is, same scenario will also appear with respect to when you are getting a question which is out of syllabus.
the same thing you should carry in your mind, that even though it is out of syllabus, you must appear the same. So these are few, you can say, personal experiences which generally I get on those calls. So I thought that at least once you are edging towards acing your examinations, this kind of silly mistakes should not happen from your side. So again, I thank Jitendra ji and the whole team for having such a wonderful, you can say, webinar come seminar, curated very perfectly, and at a right point of time it has been made. So I'll just say that take the utmost benefit of the same. If you're still not with your pen and paper, be there with your pen and paper. Keep on noting down all the points that you are going to get it. And many times it may happen that when you are listening to the speakers who are going to speak now, there are three categories of students. One, who is already doing those things. Then at that point of time, you may think that, अरे ये तो मैं कर रहा हूँ, छोड़ो नहीं सुनना, नहीं, उसमें से कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप जो कर रहे हो वो और बढ़िया और बेहतर कर पाओगे. तो learn more from it. Second category students might be जो ये करने का सोच रहे हैं. कब से सोच रहे हैं, right? तो अब तो एक टाइम आ चुका है कि you need to start it, right? Because your attempt is now next in less than a month. And the third is जो ना ये कर रहे हैं, ना कभी करने के बारे में सोचते थे, आज ही उन्हें पता चलेगा, right? बिना मेंटोस का स्पार्क होगा. Oh, this is to be done. Not to get demotivated. This is the right time you can start doing it, right? So again, wish you all the best. We wish that you prepare and perform with the utmost zeal and confidence, and you secure rank so that next time we have a galaxy of rankers here, and when you invite you as a speaker, you come and speak at the starting कि मैंने कभी विकासा में रैंकर स्टॉप या ऐसा सेशन अटेंड किया था, उसके कारण मेरा रैंक आया. Today I am here to contribute back to the WICASA. With that words, I pause myself, and again I congratulate the team and everyone joining physically and virtually. Wish you all the best. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Fennel sir, for those inspiring words. Moving ahead, we have with us the chairman of WIRC, CA Ketan Sayya sir, a name that is synonymous to excellence, a name that resonates deeply within the CA community for his immense knowledge and unwavering support to student success. With years of experience as a chartered accountant, mentor, and educator, Ketan sir has been a beacon of guidance for all and the countless aspiring CAs. Please join me in welcoming CA Ketan Sayya sir through the virtual dais. Sada, thank you so much, and a very good evening to all of you. First of all, let me congratulate the team Vikasa for a wonderful program on how to ace the exam. And let me also congratulate the branches Ahmedabad, Bhavnagar, Nagpur, Bhuj, Nanded, Pune for joining. Shikha is there, Vinodji is there. So welcome all of you, the Vikasa chairperson of the branches. It is difficult to talk after two dynamic personality talking and guiding the student. Jitendra Sagnani, as always, dynamic and rocking in and be there for the Vikasa activity. And one more personality, Fenil Bhai, who is, a wonderful speaker and a guide and a mentor for lakhs of students. So, of course, the task for me is difficult and not to, what is being said. We have a different strategies of each person, and whichever strategies are suitable to us, we should adopt. We have two personality, one in the form of Jahanvi Mehta and Prasanna, CA Prasanna. Of course, as rightly told by the earlier person, the Jahanvi AIR 4, and I also wish her that next time we call her as a AIR 1 after the final exam. And Prasanna ji, both at intermediate level and final level, both the places he has been, the ranker. We have two more such wonderful personality who are going to talk today. A dear friend Vijay from Bhuj. In fact, I am also eager to listen to him. He is going to talk about motivation, and one more such personality, Bhushan, who is going to talk about how to write exam. Both of them are very close friend and a dear friend. Coming to the strategy, of course, we have each one will have to, try and understand from all the speaker and mold and create their own strategies. But nonetheless, to my mind, it is 90% hard work and 10% luck. There's no other option other than hard work. In our time, we used to study 16 hours. When I now talk to my children or I talk to the other student,
Probably they laugh at me. They say, "16 घंटा तो possible ही नहीं है और बहुत ज़्यादा है." And we just study for maybe 8 hours, 10 hours, and I agree to them. They are more intelligent than us also, and they don't require that may not require that much study of 12 hours to 16 hours. On the day of exam, I agree what with Sanil Bhai also said, but my thought is a bit different. I feel that you create your own notes. One day prior, how do you revise? So you'll have, if you write something in your own wording, your own handwriting, I think that one day revision will becomes very, very easy, and that we think of one day, but actually it can be done in few hours. So, try and make some summary notes, some important points, and maybe on a daily morning, you can just glance all of them. Friends activities, Jitendra ji and the team mentioned, I think they all need a great round of applause. The entire WICASA team has been working very, very hard. My congratulations to entire WICASA team for wonderful organizing not only this program, but also AI program. We have been receiving a lot of good response for the AI program. 21st, 22nd November, I think we can start announcing the saving of dates to all the students. Let me tell you that when we announced a DTRC, Direct Tax Refresher course for the members, we just said that save the dates and started enrollment. Without topic, without speaker, we got 75 registration. So same thing, I will request my WICASA team, the Jitendra Bhai and everybody, that let's announce a date, 21st November, 22nd November, and let's start the registration. And I'm sure without topic, without subject, we will start getting the registration for the NetCon, which is going to happen on 21 and 22nd November. The monthly program, I think too many programs are already being discussed and planned and lined up. But my humble request to all the students who are attending virtually, who are attending physically, that you spread a word among the other students so that they are aware about what is happening. Ask and request them to follow our Insta handle so that they are also attached with the WICASA WIRC and they can, get the benefit of this program either in physical mode or in a virtual mode. With this, let me thank the entire WICASA team, WICASA chairperson, the treasurer sir for being there and organizing this wonderful program for all the students. Heartiest congratulations to each one of you. Thank you so much. Thank you, Ketan sir, for your words. Definitely gave us a new vision to the CA journey. It's not about being perfect, it's about being consistent. And there's something we all call for today. Now, moving on to the stars of the show, our rankers. There are people who have not just faced the exams, they have conquered them. Our first guest is someone who has scored AIR 4. Yes, guys, it's AIR 4. I would like to call Riddhi Verma to introduce our next speaker. Good evening, everyone. I'm Riddhi Verma, Managing Committee Member of WICASA, and I'm truly pleased to introduce you all our distinguished speaker, Jahanvi Mehta. Jahanvi is a CA finalist from Udaipur, Rajasthan, a name that resonates with excellence and dedication. She secured an exceptional All India Rank 1 in the CA Intermediate Examinations held in May 2024 and ranked first in the entire state of Rajasthan, a testament to her hard work, focus, and consistency. Her academic journey has marked by brilliance. She scored 333 out of 400 in the CA Foundation examinations and was a school topper in both 10th and 12th grades, showcasing her commitment to excellence from an early stage. Currently, Jahanvi is pursuing her articleship in Deloitte, Mumbai, where she is gaining invaluable experience in audit and financial advisory at one of the big four firms. Her professionalism, clarity of thought, and grounded attitude make her a role model for aspiring chartered accountants. We are honored to have her with us today to share her insights and experiences. Please join me in welcoming Jahanvi Mehta.
To honor our speaker, I now request WICASA Chairperson CA Jitendra Saglani sir, Dr. Fenil Shah sir, Treasurer of WIRC to present the moment to our speaker. Over to you, Jahanvi. Hi, good evening, everyone, to all those who are physically present and to all those who are on virtual mode. I'm feeling very, very honored to share the stage with the dignitaries. And thank you so much, Vikasa, for inviting me and having me as a part of this wonderful webinar, How to Ace CA Exams. So before starting, I just want to say that we will discuss each and everything related to my CA foundation and CA intermediate journey. But yes, you should not compare and not force yourself. So let's start with by the way of a presentation. We are going to go through all the papers and what was my strategy. And everybody has a different strategy, but hope you found it helpful. So while we are arranging for the presentation, let's just have a general discussion. So what is success to you? For me, success is what I wanted. I got that. And I did hard work for that. And happy with it. I don't think so that each and everything can be yours. But yes, the thing that for which you worked hard should be yours because you did 100% of your efforts. If you're doing if you're giving 100% of your efforts, if you're doing anything dedicatedly, you will surely get it because I believe you should give your best and God will definitely do the rest. And yes, All India rank for a single digit rank, it's itself like a heaven moment for everyone, who's ever got it. But yes, it ask for too much of hard work, and I believe that hard work is greater than smart work. I am a believer of hard work. So yes, and मेरे को एक चीज हमेशा motivate करती है. When I used to study for CA foundation, I had one of my teachers who used to say that तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, and I genuinely inbuilt that in myself कि yes, आप भी सोच सकते हो कि तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा. So yes, genuinely, it's a very small sentence, but it has too much meaning for me. So yes, I think you should also start feeling positive in yourself. You need a motivation. You always need a motivation. Without motivation, the CA journey would be so monotonous, boring. You will always feel to like give up. हो गया बस आज का हो गया, आज का हो गया, इस महीने का हो गया, इस हफ्ते का हो गया. But it's not like that. It doesn't work like that. It requires consistency. And I think you should have faith in three things. That's faith in God, faith in yourself, faith in your mentors. Mentors can be anybody, your family, your friends, your coaching institutions. You yourself can be your mentor. So yes, I believe that you should have faith because yes, it's luck, but it's hard work as well. So yes, I think that you should be like, you should always be motivated. You should be around positive people.
positive mindset is one thing that never ever can be beaten by anything. So what do you think? What's positivity? Anybody from our audience want to speak? What's positivity or what's positive mindset? The mindset which helps to achieve our goal is a kind of positive mindset. Do you think a person can have positive mindset and not a negative mindset at any point of time? Yeah, it's possible. I think that positive mindset is not that you're getting positive thoughts each and every time you're having positive thoughts. It's positive mindset is one thing that even if you're having a negative thought, your mind is that powerful that your negative thoughts are being overcome by positive ones. Being a human being, it is not possible to have just a positive mindset. You will always have a negative mindset, but you should not speak out of your tongue that you're having something negative in your mind, because we say that once a time in a day there's something like that, whatever you speak happens. So I think that having a positive mindset, having positive aura, so that people also feel cheerful around you, positive around you, always be interactive and have a attractive personality so that anybody can approach you as well. So yes, I think that you should inbuilt in yourself, because studying is one thing which is complemented with your mindset, behavior, attitude. If your attitude is not perfect, then studies cannot go smoothly, because everybody knows CA final also requires many hours, many hours. What was the time like you targeted? This is the time I dedicate to studies daily. To be honest, in my 9 months journey, I was having my coaching was around for 6 months, and last 3 months were dedicated to my personal self-study period and my mock test period. So in last 3 months, it was a little bit overtime. It went 14 hours, it went 16 hours, but it's okay. I felt like अभी ठीक है, इतने महीने नहीं हुआ तो भी last 3 महीने तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है. But yes, who all believe in giving mock test? Why you guys don't believe in giving mock test? Everybody believe in mock test. ICAI also organize mock test because of that only. Mock test is one thing that give you idea of कितने पानी में हो आप, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है mock test. Genuinely, I had like 3 mock tests. I had 3 mock tests for every subject. So it gave me an overall idea of what is lacking and what I'm perfect at and what I need more to do. So anybody here from CA Foundation? CA Foundation crowd? No. Okay. You are from CA Foundation? Okay. So let's talk a little bit about CA Foundation as well. We are having I used to follow MCQ strategy. For MCQ strategy, we used to have 1-pagers, like all the for maths, logical reasoning and maths, statistics. So we used to have 1-pager formulas for all the chapters and all. That used to help me a lot, because in that paper is something like that you need to manage time. Many of the students feel like पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा या फिर पेपर छूट जाएगा. अभी बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग यू कांट डू एनीथिंग. यू need to be very vigilant while ticking any MCQ. So I feel like that you should have 1-pager for all the chapters of mathematics. And for law, you need to revise n number of times. If you're having time, you can revise more 2-3 times easily, because you have only 1 day before examination in which you have to cover like law. Law was a subject that I always used to think that I would not be able to revise all the chapters in 1 day. So for that, you need to consistently revise so that you are able to cover all the material in 1 day before exam. Paper completion in law. Yes. In economics and all. Yes, paper completion is an issue and that can be solved only by practice. I think if you are seeing at a question and you know what's the answer, then it doesn't take time. I also used to have this thing in my FM, SM. I used to have like question dekha, I nahi raha. And it used to take time. It used to genuinely take time. Then
it can be easily settled by just practicing, so that in examination when you're seeing at the question, you know what's the answer. So it will not take more. You will even get the extra time if you know answers. So it can be done only by practicing. There's no way out of managing time, because you can write and practice, but you can, like, revision makes each and every person perfect. Revision is something that each and every person like wish to do, but because of time constraint is not able to do. But if you are having a proper strategy managed, time is managed, then you can have easily like around say 2-3 time revisions before giving your examination. And if you do mock test practice, you would be able to manage your time. It's not an issue. In foundation also, we are having ICAI mock test. You are having coaching mock test. You can like approach them for your time management. Like we are ready with our presentation, so we can move forward with the same. So like this is this entire summary. This is the entire summary of what I'm going to like highlight on is that first is ultimate strategy for anything, for acing anything, any examination. Like you need to have multiple revisions. You need to have multiple mock tests. Jitna bhi time bach raha, you can give it in mock test and revision, and 100% paper completion. I had one of my stories of of my FMSM examination in CA intermediate, paper 6. I was too tired giving exam. It was paper 6. It was my last paper, and I saw the paper, I was blank out. I was like, what is going on? I started with strategic management. I thought, chalo kuch to likh hi lenge. I completed my SM, and then I switched over to financial management, and I was like, abhi kya likhu. Then I like because of conceptual clarity, I was able to do questions. But yes, but there was one question in the first question. We have compulsory question. There was one part in it. There were 8 to 9 minutes left in the clock ticking 5. There were 8 to 9 minutes left. I was like, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, वो क्वेश्चन मैं अटेंड नहीं करूंगी. बट फिर मेरे को लगा एक क्वेश्चन छोड़ा, you are giving the chance to the examiner to fail you. You are giving the chance. You are ऐसा हाथ में ऐसा लाके दे रहे हो कि you can fail me. So I was like कि नहीं करना तो पड़ेगा. And when my RTI certified copies came and I saw my like I was very eager to see my FMSM checking, like how they have given me marks. It was like 5-on-5 in that question. It was entirely correct. I was not knowing the question. I was not knowing what to write, and it was 5-on-5 in that question. So I believe that you should 100% complete the paper. Positive mindset and confidence we have already discussed. Everybody has a booster, like a person who boosts you, always boosts you. It can be your parents, it can be your friends, it can be of your loved ones, anyone, it can be anyone. So you should have that person in your life for constant motivation. We are moving on to our all these 6 papers, and as we know, first one is our advanced accounts. As it has turned all AS, there are 1 to 29 years. Every AS is covered in now CA intermediate. So we are having 50% is theory AS only. So it requires like grabbing the language, because ICAI will not give marks if you don't write a perfect language written in AS. So you need to write AS, and for that you need to revise it continuously so that you are not lacking at your writing part. You should not lack at writing part. You are having practical knowledge, but you need to show it in writing that you're having practical knowledge. So you need to like be specific about your writing approach. And for all the big A's, consolidation, elimination, amalgamation, you need to have an elimination approach that we follow in final as well. We have elimination approach. We're having multiple questions. In ICAI module itself, we're not talking about coaching modules and all. In ICAI modules, we are having multiple questions. First revision, 100% questions. Second revision, 50. Third revision, 30. Fourth revision, 10%. One day before examination, you're doing only 3 to 4 questions, consolidated questions, give you immense pleasure that, oh my God, one AS is completed with 2 questions, with 3 questions. And then second paper, corporate law. Oh my God, कितना रटू, कितना पढ़ना पड़ेगा. अभी
but कुछ नहीं कर सकते. You have to revise, you have to like cram each and everything. I don't know why people think that why are you cramming, but I think that at some point of time, at least in 2-3 subjects, you need to cram. Nothing. There's no way out. Like if you write something up or down in law, it would completely change the meaning, and then you will not get marks, and then you will blame ICI that he didn't give marks, he cut our marks. But so you need to be like very point to point in corporate law, taxation, GST, and IDT used to be my least favorite subject, but अभी इंटर में मार्क्स तो बहुत अच्छा है. पता नहीं क्यों, but yes, GS, IDT and DT was like, I was always used to, like I was not able to solve consolidated questions. The 10 to 12 marks question that used to came as a compulsory question. हर बार कुछ नया क्लॉज आएगा, मुझे आ ही नहीं रहा है. हर बार एक पॉइंट ऐसा होगा जो पूरे क्वेश्चन की बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा. बट इट्स नॉट दैट. ICAI gives step marks. ICAI give means सब बांटते हैं step marks. So I saw my certified copies. I was like, oh my god, ICAI has step marking. For step marking, you need to like in big questions also, if you are feeling like नहीं एक क्लॉज में पूरा गलत होगा ये वो, so you should not waste time on it. You should start doing it, and because of step marks, out of 10 you will get 7, 8. Definitely you will get 7, 8. Only the final answer would be affected, na? So you will get 7 to 8 marks. And in GST it's 50-50, like it's 50 theory, 50 practical. So you need to practice accordingly. Costing was my favorite subject. I had 94 out of 100 in costing. Costing was like, oh my god, it was a very, I had a one pager for all the like labor material. For all we have formulas, so I used to have one pages of all the formulas, and I used to practice at the time of examination, I used to practice 5 questions from each chapter, so it used to get completed in one day, because my biggest fear was that I would not be able to revise in one day. My biggest fear was that only. During my coaching mock test, I was able to complete easily because we had a long weekend before exam, before mock test. But then I used to always think, yeah, I need to revise, but I don't think so I would be able to manage the time one day before my exam that I'm able to cover each and every chapter. So for that, the only thing is you need to reduce our course, and that can be reduced only if you have done it earlier. So because confidence is also necessary. When you reduce a course, you feel like I have left this chapter, so I will not be able to like remember it. I would not be able to like ऐसे याद ही नहीं आएगा मुझे लिखते वक्त. तो उसके लिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जो आपने पहले प्रैक्टिस कर रखा होगा. Audit. Who has fear of audit? Who has fear of audit? जिनको नहीं है उनको तो nice. Audit. Oh God, audit. Audit is genuinely means I don't know. The concept is so easy, but the question is so hard. I'm not able to click which essay to write. Audit was like एकदम मस्त subject था audit. है था क्या है? Final way we have audit. You need to revise for audit. No way out for audit. You need to do MTP, RTP so that you cover maximum type of questions, because repeated questions come, but you need to then also like be very vigilant while writing, because it is possible that you mess up in audit. But yes, we are having that 30% MCQ. That's very best thing that we have got is 30% MCQ. I had 30 on 30 in audit. I had 30 on 30 in advance. I had 30 on 30 in tax. I had 13 on 30 in which was second paper, which was corporate law. I had 4 30 on 30. Like MCQ is very, very, very interesting. We would like easily pass if we are having a grip at MCQs. And MCQs are not also tough. It was tough in SM and FM. It was tough in FM and SM. Like my last paper was like I'm not able to enjoy my after examination leave as well. FM, SM conceptual, I realized when I was doing that one compulsory question, I realized conceptual clarity foremost.
Foremost is conceptual clarity, because won't be able to do any of the questions if I'm not having conceptual clarity. And I have made a to do and not to do. It's your choice whether you want to do or not. But yes, consistent revision. You would be thinking every speaker says consistent revision, hard work, motivation. But it's genuinely, they are the, you would also feel in your inner side that yes, it matters. Consistency matters. We're also doing articleship. One day when we are not able to see one lecture, how do you feel? You feel from inside like I'm betraying myself. Like, what am I doing? What I'm giving the organization? I will learn बाद में. पहले मुझे CA बनना है. So it's like you feel betrayed that I'm not consistent on my studies. When online, the people who have taken online coachings, when they see their graph, consistency graph on the app, they feel like, what am I doing? So consistency is very much required. Practical question practice and conceptual clarity for 30 on 30. Like mostly things come from concept only. In accounts, in cost, there are practical questions which are asked in MCQs, so you need to have conceptual clarities. And in audit, why do we fear audit? Because we touch it at the last moment. Audit, most of the people touch at the last moment. They think कि भूल तो जाएंगे ही, तो पहले करके क्या करें? वो होता है. But revision का time तभी मिलेगा जब हमने पहले करके रखा हो. So touching theory subjects at last moment is like a blunder that every student do. So I also realized it in my last, when it was 4 months from my exam, I realized I am doing a blunder. I should start audit. I started audit 4 months before, in Jan, around December, Jan. And then, yes, people are like, we would refer multiple study materials. We would ace the exam. Multiple study material, I don't think so it's worth it. I think so one compiler which comprises of MTPs, RTPs, extra questions from one famous book. There is one, like you would be having your, if you are on any of the coachings, you refer any of the coachings, then you would be having your compiler which comprises of ICAI questions as well, ICAI module as well. So I feel that only one study material is enough. I know we are having internet, we are having YouTube. After listening to our teachers' lectures, also we go on YouTube, we find for extra material. I don't think so that worth doing, because we have a limited span of time. We are not having unlimited time, so we should not explore. We should explore, but we should not experiment. If you are confident about it, then you should definitely do it. But if you are doing because the other person is doing, it's not worth it. And giving unequal weightage to subjects. ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, इसको मैं बहुत टाइम दूंगी. ये सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, इसको मैं बहुत कम टाइम दूंगी. This is not, every subject has 100 marks. Every subject requires equal time, so we should give equal time weightage to all the subjects. You can do this weightage, and that weightage, who are you to give weightage to any subject, any essay or AS? You are no one to give like bifurcate on the basis of weightage. So yes, I think that's all I wanted to say. And but stay motivated, stay happy, stay confident. Now, yes, we covered foundation. We covered foundation, and I think accounts, the person who are having grip on 11th, 12th classes are easy to go with accounts. And maths is one of the fear that every CA foundation student also have. Because maths, because people like feel disconnected with maths as they have not opted for maths in 11th, 12th. So I think by maximum practice and using shortcuts, maths and statistics wala people requires shortcuts, because without that you would not be able to complete like 100 questions in 2 hours. It's not practically possible. And law requires like revisions, multiple practice of MTP, RTPs and all. So I hope now we are free, you all are free to ask any questions if you're having. So please do let me know in case of any query, questions, or anything you require from me more. How did you deal with social media distraction? I think you should ask here. The first question being, how do you handle the social media distractions?
Actually, I don't use Insta and all. I'm only on WhatsApp, LinkedIn. Only on WhatsApp and LinkedIn and personal calls and all. I don't use Instagram. I many people say me start Instagram, start Instagram. I'll start, but I'm not using it as of now because I genuinely feel it's not worth it. It's not worth it. How do you deal with the negative thoughts you get while you are preparing for the exam? Negative thoughts. I am having a friend of mine who always motivated me during my CA intermediate journey, and my parents are my constant supporter. What is negative thought? My parents don't know what is negative thought. They always say, "हो जाएगा, obviously हो जाएगा, ये क्या- it's an exam." If you think people have made a mindset that the exam is level difficult, it's level difficult, you can't clear it. This is what is your mindset now. So then it will bother you at any point of time. So you need to change your mindset. You need to take a pause. It's not that I also used to take a pause when I'm not able to study. I'm not able to study. I'm a human being. It's not possible for me to like study constantly. So you need to take a break, but break should not like exceed for many hours. Any other questions we have from the virtual joinees? So thank you so much for your patience listening. Thank you so much. You are always free to approach me. You can also ask any of the questions or queries you're having. Thank you. Thank you so much, Jahanvi. You have set the bar so high for all of us. And your tips were absolutely gold. I'm sure many of us are going to start taking study breaks more seriously and approaching a positive mindset. Thank you for showing us that balance really is the key. Next up, we have another incredible ranker joining us, CA Prasanna Surana, who secured AIR 16 in his CA finals and was a ranker at all the three levels. He is not just a rank holder, he is someone who understands the grind and the dedication it takes to succeed. To introduce our next speaker, I would now like to introduce Nanal Cholera to introduce the speaker. Good afternoon, everyone. On behalf of WICASA WIRC, I, Mumbai Cholera, welcome you all to our today's exciting and insightful session, How to Ace CA Exams. Let me introduce to you all our second speaker of the day, a true inspiration for CA aspirants across the country, CA Prasanna Surana. Prasanna Surana is a chartered accountant who has achieved a remarkable feat of securing all India ranks in all the three levels of CA journey. AR3 in CA Foundation, AR11 in CA Inter, and AR16 in CA Finals. His academic excellence extends beyond CA with a top 90th percentile score in CA for level 1 and 86% in actuarial common entrance test. He also scored an impressive 95 in advanced financial management in CA Finals, reflecting his strong command over finance and numbers. Professionally, Prasanna is part of the investments team at Motilal Oswal Private Equity, working across sectors like healthcare, consumer, and financial services. His experience includes the entire investment life cycle, deal sourcing, evaluation, research, and monitoring. He previously worked with KPMG's deal advisory practice, advising global funds on several major private equity transactions. Apart from his professional accomplishments, he is also a passionate mentor through social platforms like LinkedIn, YouTube, and Mentorverse. Prasanna has guided and inspired thousands of students across India. He regularly speaks at forums to share his journey and exam strategies, and he also has 17K plus LinkedIn followers. And his favorite tagline is, "It always seems impossible until it's done." So please join me in welcoming the very dynamic and insightful CA Prasanna Surana. Over to you, Prasanna. Yes. Yeah, thank you so much, Nainil, for introducing me. And thank you so much, Vikasa team, for having me here. I'm truly honored.
And also sincere apologies that I couldn't attend this session physically and have to attend it virtually. Just to make it clear, am I loud and clear? There is no lag, right? Yes, Prasanna, you're clear. Can you please share the PPT on the screen? Yeah. So I think Jahanvi has really set the bar at very high level. But to start with the CA final journey, first of all, let me tell you one very basic thing. There is a lot of difference between your CA foundation and inter versus your CA final. And I'm saying that not only from the perspective of CA curriculum or the vastness of the subjects, but from the preparation level. Till CA intermediate, we are students only. We have nothing to do else in our life other than some entertainment and leisure, but only to study. But after clearing your CA intermediate, when you start your articleship, then your life changes a lot. And it's very difficult to study for CA finals. So can you please move to the next slide? So if I talk about the CA final journey, it's like a long marathon, not a 100-meter sprint. So typically I will divide it into 3 parts. Number 1 is your articleship, which is for 2 years. Then your study leaves for at least 6 months. And then your 11 to 13 exam dates. First of all, if I talk about articleship, fundamentally, it's not at all easy to study during your articleship. And there are many challenges because of 2 reasons. Number 1, that you are working at a CA firm and you are learning things. You are having a lot of work during your audit year ends, quarter ends, and your tax due dates. Number 2, apart from your articleship work, your friend circle has now grown and you want to spend some time on other aspects of life. Maybe you can move to a new city for articleship. Then you have other things to do. And you want to enjoy, like you want to go to concerts, you want to roam around the city with your friends, and you want to learn so many other things apart from your articleship work also. Someone likes to just learn about stock markets, someone wants to learn some new art, and because of these so many reasons and many things to do, it's not very easy to focus on your studies. So according to me, and what I have seen across a many CA students. So I was staying at RVG hostel, which is an all CA hostel in Mumbai. And there are around 500 to 700 boys in the hostel who are doing articleship. And I have talked to so many people. Hello, am I audible? Yes, Prasanna, you're audible. Yeah. So I was saying during your articleship, broadly there are 2 aspects which you need to complete. Number 1 is your classes completion. And number 2, at the end of articleship, you need to be very clear which study materials and which material to study are you referring to during your study leaves and exam time. If I talk about classes completion, first thing, which classes to pursue, whether physical, virtual, and even uh, be it be virtual or physical, there are many options available. Then which one to choose? For that, I would suggest that you take some demo lectures. There are so many good faculties out there, and you cannot just rely on someone else advice. Better to watch the demo lectures and decide which faculty suits you the most, and then choose your classes. That is number 1. Number 2, how to complete your classes. So to get a rank or to at least have a strong footage before your study leaves, I would prefer completing your classes at least 3 months before the start of your study leaves. So I think that will around be a 1 year, 9 months of period to complete your classes in the new scheme of articleship of 2 years. Now, without planning, you cannot do many things and you cannot achieve your goals in the CA course. And the planning doesn't start only at the exam level or in the study leaves, but right from your preparation in the articleship period. So what you can do is that you plan your classes, you see which faculties you will be referring to for different subjects, check out their duration. For example, if you feel that for FR, it will be 240 hours classes, then AFM, let's say 240 hours more, and then you add up the hours, and then you decide that I have to complete these many hours
during, let's say, 15 months or 16 months or 18 months, then how can I proceed to complete my classes, and accordingly bifurcate your time, so that you will have a clear vision that, for example, you start with, let's say, FR, then you will know that I need to complete the FR classes within next 4 months or like six months. And within that time frame also, then you divide your topics and the chapters of FR into weeks and months, that I need to complete this much portion during these first 2 weeks, then in the next month, and then next month. Unless you plan, it's very difficult that you achieve your goals. I have seen people who have spent more than a year only taking classes of one subject, only for 200 to 50 hours. And that's something which will not give you very positive vibes, and you will be depressed that other peers are completing their classes. They have already completed their 2-3 classes, and I'm still on the first subject. So that you should not do. For that, planning is very important. And once you plan, then you can see, for example, while planning also, you need to see that there will be some periods. For example, if you are working in an audit domain, then you know that, let's say, April will be a month where you will not be able to study much. Then you need to allocate your timing accordingly. So that is one. In terms of classes completion, the number one question that arises is that how much hours should I study every day during my articleship in terms of watching lectures? I would say 15 to 20 hours per week would be good enough in the initial 6 months. Then you can increase it to 30 hours a week. Talking personally, I have completed my classes 80% of the time on weekends and only 20% during the weekdays because of the office work and other aspects. So weekends are very important. You need to allocate your time properly. You need to see which time suits you the best, and then decide how are you planning to complete your classes. Because once you complete your classes, I think 50% of the battle is done, and well begun is always half done. It's said, and it's very important in the CA final curriculum, because you will see a lot many people who have not completed their classes, and that's why they will always be lagging, and it's very difficult for them to pick up things during their study leaves. Even if you want to go for an industrial training after 1 year of articleship, then the decision will comes down to the aspect of how many classes have you completed. Because I have seen people who have not completed their classes during the first year, and that's why they are not able to go for an industrial training because of the timing issues. So that's very important. I think some of the participant has not been able to see the screen. There's a question in the Q&A section. Is it visible now? It was visible to me, but I don't know the person who has posted the Q&A. He should respond whether. Yeah, no, it's still saying not visible. Okay, now visible. It's saying. Great. Yeah. Further, one more question that I usually face while talking to students is that how do you complete classes when you're working at, let's say, Big Four or some top firms and you're working for long hours? I think you need to prioritize what you want to do, and for that you need to find out some ways to do it. For example, it used to take me around 1.5 hours to and fro to go to my office and come back. I used to watch lectures on my mobile during my journey in the local train in Mumbai, and that's how I completed my entire IDT. So all the IDT lectures I have completed during my train journey only, and even 70% of DT I have completed during my train journey. After a point of time, there was a time that I didn't used to watch lectures at my hostel. Rather, I would just watch lectures during my train journey and will do my self study at my hostel. So you need to find out some time to complete your lectures, because ultimately it's your battle, and you can't give your excuses to anyone that I was not able to complete my classes because of some XYZ reasons. So that's very important. Secondly, after completing your classes, second thing comes about the revision during the articleship period. Ideally, you should revise what you are studying.
at least dedicate 5 to 6 hours per week for revising what you have watched during that week. And that should be an ideal strategy. One brownie point that you can do is that you can even attempt test for those particular chapters that you have watched lectures and completed your revisions. But I think that's not very feasible, and I would not stress upon that much because even I couldn't do that. Second point, at the end of your articleship journey, you need to be very clear about your material, which books you will be following during your study leaves, and even 1.5 days of exams. So that's broadly about your articleship. Then comes your main battleground, that is your study leaves. Number one, at least 2 to 3 revisions is what I feel is the minimum number of revisions and optimum number of revisions for your CA final journey. Quality is very important. That's non-negotiable. If you are sacrificing on the quality because of the number of revisions, I don't think that will help you much. And it's very personal. I can't give you a very specific number of revisions because I have seen people who are rank holders who have revised more than 10 times during the study leaves of 4 to 5 months. And then there are students who have only revised for 2 to 3 times, still got the ranks. And there is no difference in the ranks also. So I think it's very personal. Even your study timings and all, that's very personal. You need to see that. So look at the ultimate objective. The ultimate objective is, number one, that your concept should be clear. Number two, if you get any question from that topic in the exam, are you able to write the answer? So if you find that you are able to answer that question even with 2 revisions, I think you should do only two revisions, and you should not try and stretch yourself for more revisions. But that's very personal, and that's after your self-assessment. That's why I have written the second point in study leaves, that's about self-assessment. Every day you need to self-assess yourself that how well I am prepared versus the previous day. And during study leaves also, it's about the planning. You will be having, let's say, 4.5 or 6 months of study leaves. You plan your revisions, let's say 15 days per subject for the first revision, then maybe 6 to 7 days per subject for the next second revision, maybe three days per subject for the third revision, and some buffer days of 5 to 7 days, and then your exam dates. I think completing the last revision within 3 days per subject is very important, because during the exam time, you will be having only 1.5 days to cover every subject. You will be able to do that only if you have practiced at least 3 days, at max 3 days per subject in the last revision. So you can cut it down from 3 days to 1.5 days in the exam time, but you cannot cut it down from 5 days per subject to 1.5 days per subject during the exam time. That's why last revision should be of maximum 3 days per subject, except FR, because for FR, the first paper, you'll be able to even allocate 5 to 6 days for the subject. Then comes your exam days. I think during your exam days, 2 things are very, very important. Number one is your coverage. It's a thumb rule, and it's very experimentally, it has been proven that if you don't cover some particular topic, at least in theory subjects, you will not be able to recall it during your exam time, even if you have revised it 10 times before your exam days. So it's very important to cover at least 90 to 95% of the syllabus during your 1.5 days of exam. It might not be true for practical subjects, because you might be able to solve those questions even without revising during those 1.5 days. But it's very important for theory subjects, particularly for audit. In audit, if you don't touch a topic during the 1.5 days of exam, more probably than not, you will not be able to write anything about that topic in the descriptive part. You might be able to solve for the MCQ part, but it's very difficult for the descriptive part. That's why coverage is very important. So the question arises is that, how will you ensure that you are covering each and everything within time? For that, you need to have a clear table of topics and time that you have during the 1.5 days. And you will be shocked when you complete that table, that you will be having a very few minutes for each topic. For example, if I talk about CA final direct taxation, you cannot give more than 15-20 minutes to topic like income from other sources, or even for capital gains. That's how you will be able to cover the entire subject, and that you will be able to do only after proper plotting of time. You may take guidance from some faculties exam day planners, and even if you will just look out those PDFs, you will be able to see that there is a very limited time for every topic in the 1.5 days to complete that subject well.
Second, the most important aspect during the exam time, during the 1.5 days and during those 3 hours of exam is your mindset. Before every exam paper, when the examiner was coming to me with that question paper, I used to have that smile that I am very confident about my preparation. Even if I have ignored some part, even if I was not able to complete the 100% of the syllabus, even if I was not able to see the latest RTPs and MTPs before my exam, still I have prepared well and I had done my job very honestly. And with that smile, I used to take that question paper and then open that seal and then read the question paper. That mindset is very important. And let me tell you one very fundamental thing. It's all about your expectations and the reality. I have seen people who have got so many marks during their mocks, but not able to get a rank in CA final exams, actual exams because of their mindset, because of the pressure. And how to handle that pressure is a key. And I think many of the rankers have unlocked that key, and that's why they could secure those ranks or could clear with flying colors. The key is that you need not be very sure about 100 marks paper. It's like a Subway Surfers game. I think majority of you might be knowing that game where you will be just running and collecting coins. Just like that, cherry pick the marks from the paper. If, for example, audit paper comes and you know that 15 to 20 marks of questions you don't know answer, still just collect marks for the questions that you are very sure or you know that you will be able to get at least 2-3 marks out of 5, and just try to collect marks from each question. Start with the questions that you know the best, collect marks, go ahead, collect marks, go ahead. And that's how you will be able to at least secure your first 40 marks during the first hour or 1 hour 15 minutes. Then your MCQs will help you elevate your score, and then you will be able to go for an exemption, and then even 80 plus 90 plus in practical subjects. That's how that should be the strategy. If you read your question paper in the 15 minutes reading time and you find that these are the two questions, I mean, two broad questions with three sub questions each that you don't know, don't worry at all. Just see that these three questions I know, I will start with them. Once you get in that flow, you know the answers, you are writing those answers, automatically you will be able to write something about those questions which you are finding difficult during those 15 minutes of reading time. And that's how it should go. Many people I've seen were very chill during their study leaves and all. Still, they could clear exams because they are having very calm mindset and very chill mindset even in their life. That they don't want to be at the top. They don't want that I should know each and everything. They'll just collect marks and clear the exam. So that mindset is very important. So set your expectations to a very low level on the exam day. That let's just imagine that the paper will be difficult. I'll just pick up the easy ones and try to score marks. And that's how you will be able to complete your paper and get your desired outcome. And attending 100 marks of paper is very essential because unless you attempt 100, it's very difficult to even score 80. Having said that, you might ignore maximum up to 4 marks in 2-3 subjects if you are focusing on the quality of answers in the other questions. But I think that's the maximum cap. I think 4 to 8 marks in the overall 6 subjects. That's the key. So I think that's broadly about your journey from articleship to exams. But now I would like to touch upon some subject specific points. So I would request the team to please switch to the next slide. Yeah. So at CA final level, you have 6 subjects. First is your FR, that is accounting. I think number one thing during your preparation is question sorting. I had an Excel in which I had plotted all the questions into 4 categories. First is LDR, then A plus, then A, and then B category. And this is after eliminating almost 30% of questions. This is after eliminating 30% of questions. Out of remaining 70%, I had sorted them in terms of their importance, not in terms of their probability of appearing in the exam, but in terms of the difficulty level for myself only. I mean, it's very personal. So question sorting is very important. Second thing is that many people in FR start with big index like revenue, leases, business combination, consolidation. And I think that's not the best approach because that will take up lot much of your time and will appear for only 20-30 marks in the exam.
Rather focus on small index like asset based index like 16, 38, 40, 105 and all, and other index, and then try to cover at least 60, 70 marks first, and then switch to index like financial instruments, revenue, leases, and business combination consolidation. And the in FR is the, I think, the topmost paper during your CA final, where you will find very difficult to complete your paper within 3 hours. So time management is very critical. Two things for that: before exams, try to write as many tests as possible for FR, at least 2 mocks, and allocate 1.8 minute per mark, because you'll be having 180 minutes for 100 marks. And if a question is for, let's say, 9 marks, then you should know that you need to complete it within that particular time frame, that 16 minutes time frame. So that's very important. So time management you can do before your exams by practicing, and during the exam time have a stopwatch and see that cumulatively, let's say you have attempted 30 marks of question, then you have not exceeded more than an hour. Ideally it should be 54 minutes, but let's say for an hour. So that's how you will keep track of your time and will complete the paper. Secondly, if I talk about AFM, I think the number one thing is that your concepts are very important in AFM. And recently, if you look at the November 24th paper of AFM, CA final AFM paper, it was a lot more about your concepts rather than your stepwise methodology to solve the question. So concepts are very important. Writing practice is very important for avoiding silly mistakes and avoiding mistakes of rounding off. And don't ignore the theory part, because that also appears for at least 5 to 10 marks in the CA final AFM paper. Then the elephant in the house, that is audit, the toughest subject in terms of memorization, writing, practicing, revising each and every aspect. Because I think after elimination of law and costing, that's the only theory subject in CA final. And I think that the subject deserves that much respect and time, which if you don't give it to the subject, it can take your score down to a very negative level. So concepts are definitely important in audit, but memorization is more important in terms of exam. So you need to be very clear how are you planning to memorize things. The best technique which I found out was not the mnemonics, but the story. So there is a topic, there are 5 to 6 points. You make up a story, a logical story, sometimes maybe a illogical story, but remembering those those pointers through the story formation, through that story. And the most important point in making a story is that link the topic to the story. Otherwise, you will not remember. For example, if question comes for topic A, and you will not be able to recall which story was for the topic A. And for that reason, it's very important that you link the topic heading with the story. And you should give maximum test for audit, because that will tell you how tum kitne pani mein ho, as rightly mentioned by Jahanvi. So audit mein it's very important. Write maximum test, at least 3 to 4 tests before your exams. Then comes your direct taxation. It's a very practical subject, and I think relatively easier to remember the provisions. I think as compared to audit, remembering the provisions of DT is far much easier because of the practical application and the logic behind the provisions. So it's very important that you understand the logic behind each provision, and then you will be able to remember that provision. That is leg 1. Leg 2 is practically applying that provision and solving the question. For that, your question solving is very important. Then there are some theory chapters which will come for around 12 to 15 marks in the DT paper, mainly in question 5, question 6. I think you can take their help to score 40 or 60 or even 80 plus to get a rank. And apply some techniques of revising smart in DT and IDT. Number 1 is like recordings. Create your own voice recordings for some topics, which will help you to remember those topics very quickly, efficiently, and that's very personalized, because if you are referring to someone else revision lecture, that's his way of revising that topic. You might be having a different way, and you might be having a different difficulty level for each topic within the subject. So you can record your own voice recordings and then listen to those recordings, and that will be very helpful, particularly for DT IDT. If I talk about IDT, the sequence of studying topics is very important, and I think you will be able to find that sequence from your faculties. Every faculty will tell you what's the sequence,
but you should follow that sequence even during your study leaves, your self-study, and your exam time. Second thing is that in IDT, there are so many topics which are interlinked and which are across chapters. For example, Goods Transportation Agency, GTA, you will find that concept even in RCM, registration, ITC, and lot many chapters. After completing your syllabus of the entire subject, try to write all the concepts of that one particular topic on one page across chapters, because in exam you will find a practical question which will test your knowledge of 2-3 chapters within the subject on that concept. So it's very important that you are already prepared for that, and there are at least 5 to 6 concepts in IDT which are having some or the other theses or provisions across chapters. That is very important. And again, in IDT, there are some theory chapters, particularly at the end and even in the customs, which will help you elevate your score. If you're not very comfortable with practical chapters, you can solidify your presence at the theory chapters to secure your marks. And that will be very helpful. And then the last subject, that is the mixture of all the subjects, including costing and law, that is IBS. For IBS, there are only 2 things. Number 1, material to carry. I think you need to carry all ICAI modules, each and every ICAI module, even for all the subjects like FR, AFM, audit, DT, IDT, costing and law. All the 7 subjects, all the modules, even if you are not referred to ICAI modules and focused on your own notes or on the faculty notes, still you need to carry ICAI modules, because in the IBS you might find some questions which you will not be able to figure it out the answers from your faculty's material, and you need to look at the modules. So it's very important to carry all the modules and all other material that you have followed during your study leaves, because you know which topic is on the which page on that material. So carry your own material plus your study material. Second, I will not talk about the first 5 subjects for IBS because there is nothing special to be done on that front. But if I talk about costing, so during the 1.5 days of IBS exam, you just need to look at costing index and law index and topics of costing and law which are difficult, which you will not be able to solve just by reading during the exam time. So from that perspective, allocate some time to costing and some time to law during your 1.5 days of exam for IBS. So I think that's broadly about the subject-wise strategy. And I will request the team to switch to the next slide for some common pointers which will be helpful not only for CA final but at across levels of exams and across all the exams. That is, number 1 is your planning with 90% plus fulfillment. I still believe that you cannot achieve 100% of what you have planned, and even I was not able to achieve my plans at any single day during my study leaves. But at least 90% plus fulfillment is bare minimum, and because if you are doing less than that, then you are over planning. So you need to change the way you plan things, and you need to assess yourself. So planning is very important. Then second is your ways to study. I think smart work is very important, but as rightly mentioned, smart work in CA exams is just to decide where to work hard. So it's all about hard work, and smart work is about where to work hard, because even with only with hard work you cannot do each and every aspect, because the subjects are so vast, the syllabus is never ending. So you need to be smart to understand where to work hard. And there are some other smart techniques, just like creating your own voice recordings, or for example, asking chat gpt. Even you can take help of chat gpt to understand the concept, or just referring to some revision lectures to understand a particular topic. So these are some smart ways to study. And lastly, and the most importantly, is your mindset. Again, we are emphasizing a lot on mindset, but that is very important, and it's very critical that you study peacefully. I still remember during my study leaves, I was peacefully studying. uh, that mindset is very important. I have seen people who had studied for 14 hours a day continuously during 4 to 5 months of study leaves, still couldn't be able to were not able to achieve what they were dreaming, but because they are not studying peacefully. So peaceful study is very important. And I think, what do I mean by positiveness or peaceful study is that what you are doing, if you are able to do that easily without any obstacles or without any kind of stress, then that's the peaceful way of studying. That's the positive mindset. So that's very important.
And at the top, at the left, we have added this in the slide master, that believe, prepare, achieve. I think belief in yourself is very important. It always seems impossible until it's done. That's very true, because you will always wonder that will I be able to do this? It's very difficult, and it's not something. It's not my cup of tea. That's not true. If I can do it, you can do it too. And it's all about our belief, then our preparation, and achievement is the result of your belief and preparation. So I think that's all from my side. Happy to take any questions that you might be having. And yeah, I think I can see some questions. There is a questions on conceptual clarity. What is the meaning of conceptual clarity? I think that's a very basic fundamental question which hardly anyone asks, but that's a very good question. uh, so according to me, conceptual clarity means you are able to apply what you have learned. For example, you have studied AFM and you studied the formula of cost of equity, the basic formula of cost of equity, and then WSCC, weighted average cost of capital. Then if you are able to apply that formula and practically calculate the cost of equity of a listed company or some unlisted company using the proxy of listed company, then that's conceptual clarity. Conceptual clarity is all about practical application of the theoretical concept. If you are able to do that, then you are conceptually clear. If you are just learned the methodology, if you are just learned the way to solve a question just from the exam perspective, then that's not a conceptual clarity. You might be able to solve those questions during the exams if you are lucky, but that's not something which is expected out of you from which ICAI is not expecting from you. And I think if you are doing justice to your work according to what your mother institution is expecting, and what is expected out of a professional, then you will be able to secure a rank or come out with flying colors and get that CA degree. So conceptual clarity is all about so just to assess yourself, just test that am I able to practically apply these concepts which I have learned theoretically. That's conceptual clarity. Then पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं during exam. So that's all about your mindset. That's very true. Even I know a ranker who is in the top 3 in my attempt. He was not able to solve something and he fainted for 5 minutes during the FR exam because of the pressure. So I think मैंने जो बोला था कि it's all about picking those marks. Just solve those questions जो आपको आते हैं, collect those coins, collect those marks, and go ahead. If you achieve a particular milestone, then automatically वो motivation आएगा and you will be able to achieve the further milestones, and at the end you will be able to achieve the entire roadmap. So that's how it should go. Okay, sir. So as we were talking about mindset, so what is the basically difference between a person who has just cleared his CA exams and a ranker in terms of mindset? I think there are differences at 2 levels. Number one is at the at aiming level as well. There are some people who just want to clear. They don't. Maybe they are not believing in themselves. They have never believed in themselves, and they are thinking that I just need to clear the exams. So they are satisfied with that. That is at number 1 level. Number 2 is at the practical application of your dream, or practically thinking and assessing yourself. Am I on the right track? So I have seen people who are aiming for AR1 but even couldn't clear exams because they're not assessing themselves and were not on the right track. If you talk about the mindset difference between a ranker and non-ranker, number 1 is at the aiming level, dreaming level. Number 2 at the execution level. And I think even I cannot say that it's about the hard work. I have seen people who couldn't clear but worked hard even more than me. It's about how are you assessing yourself and checking कि जो outcome निकालने वाला है, that is getting those marks in exams, क्या तुम वो achieve कर पा रहे हो? And I think we have a session from CA Bhushan Gosar sir on effective paper writing. That also makes the difference. And just to share that I am a student of CA Bhushan Gosar sir since from my 11th standard till my CA intermediate, and he was my mentor during even my CA final journey.
So he'll be better able to answer this question on effectiveness of paper writing. That will make a difference between a ranker and non-ranker, both who are dreaming for that rank. Okay, thank you, Prasanna sir. You have truly made the idea of staying consistent and not letting the knockdowns and setups. Let's feel it's more achievable. If there is one takeaway from today's session, it is that the success is a marathon and it is not a sprint. Let's make a great round of applause for Prasanna sir. Thank you so much. Thank you. Continuing the momentum of this Power Pack session, it is our honor to welcome a leader who continues to be a source of strength, support, and inspiration for countless CA aspirants. CA Shikha Agarwal, the chairperson of the Ahmedabad branch of WICASA. Under her dynamic leadership, there has been incredible growth in student-centric initiatives, academic excellence, and the overall engagement. Her commitment to nurturing the next generation of chartered accountants is truly commendable. We are grateful for her guidance and her vision that continues to uplift the CA community. With great respect and enthusiasm, let us all welcome CA Shikha Agarwal. Thank you. Thank you, WICASA WISA team. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank WICASA WIRC team for curating such a wonderful session just before the examination to motivate our aspiring students, and the students are taking advantage of these sessions. We can see that. This was really an insightful, inspiring session we just witnessed. On behalf of WICASA Ahmedabad and all other organizing branches, I extend my heartfelt thanks to Ms. Jahanvi, Mehta, and CA Prasanna Surana for generously sharing their journeys, practical strategies, and powerful perspectives. Yes, it is very clear that success in the CA exam isn't just about hard work. It's about smart planning. You have to be focused, being consistent, and above all, believe on yourself. Today, we have learned that time management, mindset, and structured revision can make all the differences between passing and excelling. So, passing is, we don't have to just pass, we are aspiring for rank, then we have to be consistent, we have to be clear with the clear mindset, and with dedication, we can achieve our all goals. To all the students here, take these learnings seriously. Don't just get inspired. Take actions and implement what resonates with you, and customize it to your routine, and keep pushing forward. Remember, every ranker was once a student, and just be like you, facing the same books, same doubts, and the same deadlines as well. So let this session be the beginning of the more confident, disciplined, and focused version of yourself. And be prepared and be guided. And thank you once again, and all the best to all the students who are appearing in this May 2025 examination. Get your success with flying colors. And once again, I would like to thank WIRC WICASA team for curating such events and also accommodating Ahmedabad branch and other branches for these kind of sessions. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I'm sure we are all feeling a lot motivated already after hearing your inspiring words. But wait, there's more up. We have with us CA Jignesh Vanra. He is someone who has not only excelled in CA profession, but has also been a source of guidance for many of the aspiring chartered accountants. Please welcome and join with us CA Jignesh Vanra, chairperson of Bhavnagar branch. Yeah, thank you. Am I audible? Yes, sir, you are audible.
Good evening, everyone. As we conclude the half of the webinar, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed speakers, Ms. Jahanvi Mehta and CA Prasanna Suranas, for their inspiring and insightful session. Your guidance has been invaluable in motivating our students in their CA journey. On behalf of Bhavanagar Vikasa, I further extend my heartily thanks to WIRC Chairman CA Ketan Saya sir, Vikasa Chairman Jitendra Saglani sir, Treasurer CA Fanil Shah sir, and all the managing committee member of Student Association of WIRC for their efforts in organizing this webinar. A big thank you to all the participants for your active engagements. Lastly, I am closing my words with these lines for students for their upcoming exams. हर दिन की मेहनत, हर बार की ठोकर आपको उस मुकाम के करीब ला रही है जिसका आपने सपना देखा है. खुद पर भरोसा रखें, प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं, रोज की कोशिशों से मिलती है. Wishing you all a great success. Thank you. Have a pleasant evening. Thank you, Jignesh sir, for those incredible insights. Your deep knowledge, shairi, poem, and your practical tips have motivated us and enlightened us through this success journey. Your guidance has been truly invaluable, and we are truly grateful for the time and effort you have dedicated to this session. Thank you so much once again. Thank you. Thank you very much. So, as we conclude the first half of the session, all right, it's a time for a short break. Go ahead, grab some snacks, hydrate, and talk to some fellow CA warriors. You know, it's important to remember we are all in this together. And hey, snacks are a great motivator, right? We'll be back in 15 minutes. Thank you so much. We'll be resuming the session by 5:50 p.m.
All right, now that everyone's back and had their snacks and hopefully not slipped into a food coma, let's warm up with something fun. If the CA exams were a movie, what genre would it be? Horror, psychological thriller, action, or a romantic tragedy? Psychological thriller. Romantically horror. All right, so let's get into how to actually master the beast. Because today we are flipping the script from exam horror to exam conqueror. Okay, so now I would like to invite our Vice Chairperson Piyush Chandak sir. Okay, Krishna, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay, I think the speaker is also online. I'll request speaker to also join and like start his video and mic as well. Yes, welcome, Vijay ji. Thank you, sir. Yes, and I guess one more speaker I can see online, CA Prasanna ji. Prasanna ji, can you also like join? Hello. Hi, sir. Hello. So, Krish, we are good to go. Like all the participants are there. Yes, sir, all set to go. All set, na? Great. So, very good evening, my dear students. And I can say, my dear WICASA buddies, because last year we started with this concept of a community of buddies wherein all the students of WICASA are informally part of this community. We call it proudly as WICASA buddies. My dear friends, the purpose of forming this informal thing was just to like reduce the gap between all the students and the CAs and the members and like all the office bearers and everything. In this community, nobody is chairman, nobody is vice chairman, everyone is just a buddy. And when we are buddy, we can share anything with anyone. And that is how we were going through and going forward. Now coming towards the particular seminar today, I congratulate the team WICASA and the chairman, CA Jitendra Bhai, and all the committee members of WICASA to organize this particular seminar for the benefit of all the students, because exam fear is always there. आज भी हमको याद आता है, कभी कभी हमको भी सपना आ जाता है कि हम कहीं कल एग्जाम तो नहीं देने जाने वाले सीए की. So this is how that terror and this is I think I can say कि ये सीए की एग्जाम ने जो बना के रखा हुआ है ना, that is important and that is very like fascinating in our life. My dear friends, today we are having a session by one of my friend, CA Vijay, who is like upcoming and emerging and very energetic motivational speaker. I guess we are all going to get motivated with his talk. But before just starting, I'll just let you know what WIRC is trying to do all for members and students. And particularly this year, our ICAI has formed a new committee named as Promoting Work and Life Balance amongst CAs and CA students. So my dear friends, fortunately, I am being the first chairman of this committee at WIRC level. And we are looking forward to you for the ideas which this committee can do for you in the form of arranging sports, in the form of arranging yoga, sports, anything you like. Like it is, I believe, that balancing between your physical health, between your profession, between your studies, and between your all the stress and managing it well. And this is how we are going to go. We are going to have a long time ahead. But with this, I'll congratulate again and thank for the opportunity, Krish and Sadaf. And over to you now. Thank you, Piyush sir, for your valuable insights. Thank you very much. It's time to hear from another So I powerhouse. guess, wait a minute, Sadaf and Krish. I guess CA Bhushan sir is also there. I'll request him to like open his video. Also, I can see Vinod Agrawal ji, Chairman, WICASA. So welcome all of you to WRC and WICASA, sir. Is Jitu sir also there right now, Jitendra sir? Yes, sir. So can you just ask him to और थोड़ा सा घुमा दो कैमरा उनकी तरफ भी. So all in the frame now. So Jitendra sir, again I'll take this opportunity to congratulate you and also welcome Shri Bhushan Gosar sir
my friend from Nashik, one of the good speaker and a motivator. He is one of my ideal for something which we all like, to have a good physique and health. And also Vinodji, welcome to you as well. Now over to you, Sadaf. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, so now it's the time to hear from our powerhouse speaker, CA Vijay Thakkar, who will be talking about the CA journey. This is someone who has helped countless aspirants navigate their CA journey with success, and we are lucky to have him here. I would now like to call Samiyan Kulkarni to introduce our new speaker. Hello. So good evening, everyone. I am Samiyan Kulkarni, and I am pleased to welcome you all for this part of today's seminar, that is transforming aspirers to achievers. We are truly honored to have with us today a very special guest, someone who wears many hats with grace and passion, CA Vijay Thakkar sir. Vijay sir is not just a chartered accountant, he is a mentor, he is a life coach, a motivator, and a guide to thousands of CA students. He, with over 8 years of experience of CA coaching and another 8 years as a share market consultant, his journey is a testament to dedication, resilience, and a deep-rooted passion for empowering students. He has been the past chairman of Bhuj branch of WRC of ICAI and has been actively connected with the students community since 2011, having personally guided more than 5,000 CA students so far. Apart from the world of academics and finance, what sets him apart is his spiritual and motivational drive. He has conducted many spiritual offline events which are attended by over 10,000 spiritual devotees so far. So please give it up for CA Vijay Thakkar. Thank you, first of all. Vijay sir, I just wish to convey students here. Vijay sir is a good friend of mine. During his chairmanship, we had a wonderful time as a Bhuj RRC. 200 plus members attended at RRC, 6-7 buses, और इतना सारा कुछ विजय सर ने इतना अच्छा किया था. So friends, you will be having a wonderful time. Vijay sir, आपका कोई presentation है तो please आप just check कर ले if that is playing properly. बस presentation लगा दो ना please. PPT is already there with you. Okay. So we'll just put it on. Thank you, Piyush bhai. Thank you. Is it audible, everyone? Okay. Thank you, Jitendra Shah. First of all, a mentor of the whole WIRC, I would say, a very humble and highly honest person, Ketan Sayya sir. And I would say, mentor of the whole WICASA of WIRC, very much dedicated and very supportive, Jitendra Shanglani sir. And I would like to add on that the bundle of the knowledge, the vice chairman of the WIRC, Piyush Chandak sir, the chairman of all other branches, the next speaker, Bhushan Gosar, CA Bhushan Gosar sir, other members and dear students. A very good evening, everyone. Can we start? Yes, sir. Is the PPT ready? Yes, sir, it's ready. Is it visible, sir? Yes. Yes. Okay. It is not controlled by me. Hello.
So I have given you the remote control as such. Okay, now check. Today's topic is the CA journey transforming aspirants into what achievers. और लाइफ में कोई ऐसा बंदा तो दिखाओ जिसको अचीवर नहीं बनना है, जिसको सक्सेसफुल नहीं बनना है ऐसा कोई इंसान ये दुनिया में कि जिसको अचीवर नहीं बनना है कोई ऐसा इंसान? आई वुड से नो। सभी को क्या है? अचीवर बनना है, सक्सेसफुल बनना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए पता है आप सभी को? सबसे पहले एक दिमाग में क्लियर गोल चाहिए। जब तक दिमाग में क्लियर गोल नहीं होगा ना, नहीं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अचीवर बनना है, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई वुड से आपको स्क्रीन पे एक पिक दिख रहा होगा, दैट इज अ फेमस क्रिकेटर MS धोनी। वी नो, हम सभी को पता है कि ये जो धोनी साहब है वो क्या करते थे? TC का काम कर रहे थे, टिकट चेकर का काम कर रहे थे। जब भी वो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते थे ना, उसके दिमाग में एक ही चीज थी, क्या है? क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, मेरी नेक्स्ट मैच ये दिन को है, मुझे ऐसा परफॉर्म करना है। प्लेटफॉर्म के बाहर भी थे ना तो भी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, व्हाट? मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड हम सभी को पता है वो फेमस क्रिकेटर उसने बन के दिखाया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सचिन तेंदुलकर। वो पढ़ाई में है ना बहुत 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 टाइम फेल हुआ करते थे, बिकॉज उसको पढ़ाई पसंद ही नहीं थी। उसके दिमाग में भी एक ही चीज थी, व्हाट? मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है। एंड वी नो ही इज आल्सो वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर। ये तो रियल लाइफ है। अब मूवी की बात करूं, आप सभी ने एक फेमस मूवी देखा होगा, KGF। देखा है सभी ने मूवी? यस और नो? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, प्लीज एवरीवन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी KGF? Please reply in the chat box. Okay. Okay, many of you have seen the KGF movie. अब क्या है, वो जो KGF का एक्टर है ना, उसका जन्म भी क्या होता है? बहुत 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 गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ होता है। बट जन्म पे उसकी माताजी उसको क्या कहती है पता है? कि आपको दुनिया का सबसे धनिक एंड ताकतवर इंसान बन के दिखाना है। माने तो उसका गोल एक फिक्स हो जाता है, उसको दुनिया का सबसे धनिक एंड ताकतवर इंसान बन के दिखाना है। वो लाइफ में मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, उसको टैकल करके वो आगे बढ़ता है। एंड हम सभी को पता है वो जो उसने ठाना है, जो उसने सोचा है, वो करके दिखाता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आई वुड से पुष्पा मूवी। पुष्पा मूवी आई वुड से सभी ने देखी है, यस और नो? बट ऑब्वियस है, अब पुष्पा में भी क्या है, उसका जो हीरो है उसको क्या करना होता है? जो पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई है उसमें उसका जो हीरो है उसको क्या करना है? चीफ मिनिस्टर के साथ क्या करना है? एक फोटो खिंचवाना होता है। बट चीफ मिनिस्टर मना कर देता है। तो बट उसने ठान लिया था, नहीं मुझे चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाना ही है। तो वो क्या कर देता है? पूरा चीफ मिनिस्टर चेंज कर देता है, एक नई सरकार खड़ी कर देता है। माने तो सबसे पहले मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं पता है? आपको सपोज लाइफ में अचीवर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले माइंड में क्लियर गोल होना चाहिए। एज अ एस्पायरेंट्स टू बी सीए, हु वांट्स टू बी सीए, सबसे पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बाय हुक और क्रुक, चाहे दुनिया हिल जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने सीए स्टार्ट किया है तो मुझे सीए फिनिश करना है, करना है, करना है। वो तो पता चल गया, चलो भाई मुझे सीए बनना है। अब क्यों बनना है सीए? What is the value of CA in the market? What is the role of CA in the market? हम सभी को पता है, अब सीए बन जाओगे ना तो ये 3 चीजें तो आपको मिल ही जाएगी। क्या? गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, अरे लाइफ पार्टनर मिलेगा, बच्चा मिलेगा, वो सभी तो आप है ना सीए बनने के बाद हासिल करने वाले ही हो, वो हम सभी को पता ही है। बट एक्चुअली आई वुड से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीए? तो क्या था फ्रेंड्स, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया गया एंड साथ साथ में क्रिकेटर्स, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया, साथ में उसमें एक सीए को भी इनवाइट किया गया। सभी ने अपने बारे में बोला। आपको पता है जब सीए की बारी आई ना बोलने की, तब सीए ने क्या कहा पता है? सीए ने सिर्फ एक वर्ड बोला,
एंड सभी स्तब्ध हो गए, सभी चुप हो गए। वो कौन सा वर्ड है पता है? सिर्फ सीए ने ऐसा बोला कि यहाँ पे जो हॉल में जो भी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्रिकेटर है, सेलिब्रिटीज है, कोई भी है, एक इंसान मुझे बताओ कि जिसको मेरी जरूरत नहीं है। माने तो दुनिया में 150, हमारी इंडिया में 150 करोड़ की जनता जनार्दन है, उसमें से जो भी इंसान रुपए कमाता है वो सभी को सीए की जरूरत है। बट क्या सीए को ये सभी की जरूरत है? द आंसर वुड बी नो। देयर इज अ वेरी 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 वास्ट रोल ऑफ सीए दैट वी ऑल आर नोइंग। अरे मैं क्या बात करूं एज अ स्टूडेंट, आपकी सपोज कोई एक गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो छोड़ के आपको चला जाता है, उसका मैरिज कोई दूसरे के साथ होता है, एंड सपोज वो बिजनेस में है, रुपए कमा रहे हैं, तो भी उसको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। माने तो सीए का रोल तो बहुत 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 बड़ा है। हम सभी को पता चल गया कि नहीं, अब सीए स्टार्ट किया है तो मुझे सीए फिनिश तो बाय हुक और क्रुक करना है। बिकॉज एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सभी जो है ना, जितेंद्र सर है, पीयूष सर है, भूषण गोसर सर है, विनोद अग्रवाल सर है स्क्रीन के ऊपर, देन आफ्टर आई वुड से केतन सैया सर है। ये सभी जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सभी के पास रुपए बहुत है। ये एक बात से आप मेरे से सहमत होंगे कि ये सभी के पास क्या है, रुपए बहुत है। अब उसका इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या चाहिए पता है? एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। सपोज फैमिली की हेल्थ बिगड़ जाती है तो क्या चाहिए? एक डॉक्टर चाहिए। सपोज कोई लीगल मैटर है तो क्या चाहिए? एडवोकेट चाहिए। सपोज आई वुड से फर्म का ऑडिट करवाना है तो क्या चाहिए? सीए चाहिए। अरे एक चीज पूछता हूं, मैनेज करना है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, मुझे लाइव रहना, इंटरएक्टिव रहना, मजा आएगा। एंड मैं जो भी कंफ्यूजन थे ना, आपने आगे पूछे थे। एंड जो पहले हमारे स्पीकर थी जानवी, उसने भी कहा था कि हमको एफर्ट्स चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, गिव योर बेस्ट। एंड प्रसन्ना ने कहा था कंसेप्चुअल स्टडी चाहिए। एक एक डाउट आपका आज यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। जस्ट बी इंटरएक्टिव। एंड मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि सपोज मुझे मैनेज करना है तो क्या चाहिए? अच्छी तरह से मैनेज करना है, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। एनीवन कैन रिप्लाई। मैनेज करना है भैया, क्या चाहिए? Vijay, so you are on mute. Kindly accept your unmute request. Okay. Yeah. Done. I'll share my screen here. Okay. मीन्स मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ पता है? स्क्रीन आए रोज आपको बड़ा सा बंगलो बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स, हमको लाइफ में कुछ लाइफ बेटर बनानी है, कुछ बड़ा सा हासिल करना है, तो हम सभी को पता है सबसे पहले क्या चाहिए? एक गोल चाहिए। एंड हम सभी का एज अ सीए स्टूडेंट्स एक गोल बन गया है कि बाय हुक और क्रुक हमको क्या करना है? सीए बनना है। प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन मोड प्लीज। So the presentation is started. Okay, डन। नाउ हम सभी को पता चल गया है कि हमारा गोल है, हमको सीए बन के दिखाना है। अब मेन चीज है कि ये गोल सेटिंग कैसे करें, व्हाट। तो अब आपको स्क्रीन पे देख, प्लीज गिव द कंट्रोल। ओके, So I've given you the control. Please check. okay, now
अब आपको है ना स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक बंदा, ये कौन है? एलन मस्क, दुनिया का सबसे धनिक आदमी। अब सपोज हमने गोल डिसाइड कर लिया है ना, तो उसका गोल सेटिंग एग्जैक्टली कैसे करना है, कि हमको सीए एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे ना तो आराम से सीए बन सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने एलन मस्क को पूछा कि सर आप गोल सेटिंग कैसे करते हैं? एलन मस्क ने रिप्लाई दिया कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, मैं आने वाले 10 साल के गोल लिखता हूं। तो सपोज आपको सीए बनना है ना, तो सपोज आपको डायरीज में कोई जगह पे लिखना पड़ेगा कि कौन से साल में मुझे सीए कंप्लीट करना है। फिर उसको पूछा फिर आप क्या करते हो, तो फिर उसने बोला कि मैं फिर सोचता हूं कि आने वाले 10 साल का गोल मैं सिर्फ 1 साल में कैसे अचीव करके दिखाऊं। फिर वो कहता है कि मैं क्या करता हूं, एक्शन प्लान बनाता हूं पूरे का पूरा, कि ये कब अचीव करूंगा, कैसे अचीव करूंगा, कहां पे अचीव करूंगा, वो सब कुछ डिटेल में प्लान बनाता हूं। माने तो आपको भी क्या करना है, आपको सीए कब कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, कौन कौन सी टेस्ट आपको देनी पड़ेगी, वो सब कुछ आपको डिटेल्ड में एवरी ईयर का, एवरी मंथ का, एवरी वीक का, एवरी डे का प्लानिंग आपको पहले से करना पड़ेगा। फिर उसको पूछा फिर आप क्या करते हो, तो वो कहता है मैं रिसोर्सेस इकट्ठा करता हूं, जो भी मुझे रिसोर्सेस चाहिए, आने वाले 10 साल का गोल मुझे 1 साल में अचीव करना है, तो 1 साल के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो सभी को मैं क्या कर देता हूं, इकट्ठा कर देता हूं। फिर तो क्या है, सभी ने कहा, जानवी ने कहा जो रैंकर है, देन आफ्टर प्रसन्ना ने कहा कि क्या है, आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड वो कहता है मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूं, एंड यू विल बी सरप्राइज, वो कहता है कि 1 साल के अंत में मेरे मेजोरिटी ऑफ द गोल्स अचीव हो जाते हैं। माने तो 10 साल में से मेजोरिटी ऑफ द गोल्स, माने तो 5 साल के गोल वो सिर्फ एंड सिर्फ कितने साल में अचीव करता है, 1 साल में। इसीलिए तो वो क्या है, दुनिया का सबसे धनिक आदमी है, बिकॉज वो 19 साल का था ना तब से ये गोल सेटिंग कर रहा है, अभी है एज उसकी 53-54 ईयर्स, तो इसीलिए वो क्या है, बहुत दुनिया से 140 साल आगे चल रहा है। माने तो हमने दिमाग में बिठा लिया कि हमको सीए बनना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लिखो, एक्शन प्लान बनाओ, उसके लिए जो भी चाहिए मटेरियल्स वगैरह वो सभी इकट्ठा करो, एंड दिन रात क्या करो, मेहनत करो। अब फ्रेंड्स एक दिमाग में अब मेरा क्लियर हो गया कि नहीं मुझे अचीवर बनना है, मेरा गोल फिक्स है, नहीं मुझे सीए बन के ही दिखाना है। बट आप सभी को पता है देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शन दैट द सीए एग्जाम्स आर वेरी वेरी टफ। ये मार्केट में सभी लोग कहते हैं कि कोई बच्चा है जिन्होंने 1st to 12th स्टैंडर्ड में वो क्या है, अचीवर है, टॉपर था, बट वो सीए एग्जाम्स में क्या होता है, फेल होता है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। वो क्यों फेल होता है पता है, बिकॉज वो मेहनत जो चाहिए ना उतनी नहीं करता है, डेडिकेशन लेवल उसका नहीं है, फोकस लेवल उसका नहीं है। उसको एक बार पूछना, जो टॉपर है और सीए में फेल होता है, उसको पूछना भाई तू कितनी मेहनत और कितने डेडिकेशन से तूने काम किया था, 10th एंड 12th में जो तू मेहनत कर रहा था, जो फोकस था, जो डेडिकेशन था, क्या तूने वो फोकस डेडिकेशन के साथ सीए एग्जाम्स दी थी? द आंसर वुड बी नो फ्रेंड्स। तो मार्केट में ये सभी डराते हैं सीए टफ है, टफ है, टफ है, बट आज आपका जो पूरा डर है ना वो सब भी यहाँ पे सेशंस के एंड में निकलने वाला है। एंड सपोज आपने ये सुना है, एंड अज्यूमिंग कि सपोज आप फेल हो जाते हो ना, तो फिर क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हो। अरे मैं कहना चाहूंगा यार, फियर एंड द फ्रस्ट्रेशन, ये दो क्या है, सीए जर्नी है ना, जो सीए वाली ट्रेन जा रही है ना, सीए जर्नी, ये ट्रेन कहां तक पहुंचाएगी, हमको सीए बनाएगी। ये जो सीए की जर्नी है ना, उसके फियर एंड फ्रस्ट्रेशंस आर द पैसेंजर, वो पैसेंजर है, बट उसको कहां पे रखना है, सबसे पीछे रखना है। हमारा फोकस सिर्फ एंड सिर्फ कहां पे होना चाहिए, सीए की जर्नी में होना चाहिए। एंड डे बाय डे हमको क्या करना है, हमको इंप्रूव करते जाना है। ध्यान में रखना, ये फियर एंड फ्रस्ट्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा कि सपोज आपको इंप्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हो। एक बार क्या हुआ पता है, एक यूएसए में जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, उसका जो प्रोफेसर था
उसने क्या किया, जो भी स्टूडेंट्स थे ना उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप था ना, उसको उसने टास्क दिया कि आपको सबसे बेस्ट टू बेस्ट मटके बनाने। बेटर वर्ड वुड बी, आपको जो बेस्ट क्वालिटी का मटका बना के देना है। मटका माने तो क्या है पता है ना, पॉट जिसमें हम पानी भरते हैं घर पे। एंड दूसरा जो ग्रुप था ना, उसको उसने टास्क दिया कि आपको मैक्सिमम मटके बनाने हैं, क्वालिटी की आप चिंता मत करो। तो पहला ग्रुप लग गया किसके पीछे, परफेक्शन के पीछे, बेस्ट बनाना है, बेस्ट करना है, उसके पीछे, परफेक्शन के पीछे लग गया। दूसरा ग्रुप कहां पे लग गया, मैक्सिमम बनाने के लिए। एंड वो क्या कर रहे थे पता है, पहले मटके बनाए उन्होंने, दूसरे ग्रुप ने, तो थोड़े बहुत बिगड़े हुए मटके थे, उसको इंप्रूव किए, फिर से मटके बनाए, फिर से इंप्रूव किए, फिर से मटके बनाए, फिर से इंप्रूव किए। एंड एट द एंड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के बाद पहला ग्रुप अपना बेस्ट मटका लेके आए, सिर्फ एक ही मटका लेके आए। बट जो दूसरा ग्रुप था, उन्होंने तो पूरा रूम भर दिया था मटके से, बिकॉज उनको क्वालिटी की चिंता नहीं थी। उनको क्या करना था, जो भी बिगड़ा हुआ है इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। तो लाइफ में क्या है, आपको फेल्योर आएंगे, आप सपोज फेल्योर होते हो तो चिंता मत करो, उसको क्या करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। आपकी फोकस है ना सीए की जर्नी के पीछे लगा दो, इंप्रूव करते जाओ, सीए की जर्नी के पीछे फोकस लगाते जाओ, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव द सक्सेस। मैसेमराइज इंप्रूव कैसे करना है, तो क्या है फ्रेंड्स, इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्टडी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बातें मैं कहना चाह रहा हूं वो भी आपको, बट फोकस कैसे करना है ना, डेडिकेशन कैसे करना है, इंप्रूवमेंट कैसे करना है, गोल कैसे अचीव करना है, वो लेटर ऑन हम आगे लेने वाले हैं। तो बनते रहना। अब इंप्रूव कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू चेंज योर स्टडी हैबिट्स। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की बातें हैं। सबसे पहले प्रिपेयर द नोट्स। किसके लिए नोट्स बनानी है पता है, रिवीजन के लिए। आपको चाहे कुछ भी हो जाए ना, डेली रिवीजन एंड वीकली रिवीजन करना ही करना है। वो कहां से करोगे, तो जो आपने नोट्स बनाई है ना उसमें से रिवीजन करना, शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड, आप सपोज 12 घंटे पढ़ना है ना, तो 12 घंटे इज अ वेरी मच लॉन्ग टाइम। दिमाग क्या है, स्टक हो जाता है। तो बेटर क्या है कि सपोज आप कंटिन्यूअसली 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो ना, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, 6 घंटे क्या करो, इंडिविजुअल स्टडी करो, 6 घंटे आप क्या करो, ग्रुप स्टडी। बट ग्रुप स्टडी में ग्रुप ऐसा बनाओ जो फोकस है, डेडिकेटेड है, जो सीए बनने के लिए आया है, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया है। बिकॉज ग्रुप स्टडी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, डाउट सोल्व हो जाता है, एंड लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग क्या करो, ग्रुप स्टडी करो। दैट जानवी ने भी कहा था, प्रसन्ना ने भी कहा था, टेक अ सफिशिएंट ब्रेक। 12 घंटे पढ़ना है ना, तो 2 घंटे के बाद क्या है, एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स का ब्रेक, नॉट बट ब्रेक बहुत मच स्ट्रेच हो जाए, वो एक खास ध्यान में रखना। देन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो स्टडी करना है ना, इसको नोट डाउन करना, खास नोट डाउन करना। 0% डिस्टरबेंस जोन में आपको स्टडी करना है। अब 0% डिस्टरबेंस जोन माने तो एक ऐसा कमरा जिसमें आप हो एंड अपनी नोट्स एंड बुक्स है, नो गैजेट्स एट ऑल, मोबाइल भी नहीं, किसी को वहां पे आना भी अलाउड नहीं है। घर पे चाहे कोई भी आए ना, नीचे मम्मी पापा को कह देना है कि मैं जब तक स्टडी करता हूं ऊपर मुझे बुलाने आना नहीं है, मुझे भूख लगेगी मैं खुद नीचे आऊंगा, बट आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन नहीं है। जो 0% डिस्टरबेंस जोन में सपोज आपने स्टडी की विदाउट एनी गैजेट्स, डेफिनेटली योर फोकस इज गोइंग टू बी इंप्रूव, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, दिमाग में जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, कंफर्टेबल जोन में स्टडी करनी है। लोग क्या कहते हैं पता है, कि आपको जो स्टडी करने है तो ऐसे टेबल के ऊपर बैठ के, स्ट्रेट बैठ के ही स्टडी करो तो दिमाग में जाता है। नहीं, ऐसा मिसकंसेप्शन है। आपको जो कंफर्टेबल जोन लगे ना, वो कंफर्टेबल जोन में रह के स्टडी करो। आपको दैट इज आई वुड से
नीचे बैठ के मजा आ रहा है तो नीचे बैठो, चेयर के ऊपर मजा आ रहा है तो चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर बैठ के मजा आ रहा है स्टडी करने का, माने तो आपको जहां पे भी कंफर्टेबल है, जैसे भी कंफर्टेबल है, उसको वही सिचुएशन में बैठ के 0% डिस्टर्बेंस जोन में स्टडी करो। देन आफ्टर सफिशिएंट स्लीप, दैट इज मिनिमम 5 to 6 आवर्स की स्लीप नेसेसरी है आपको माइंड को शार्प करने के लिए। एंड ये एक चीज ध्यान में रखना, जो भी है ना डिफिकल्ट लर्निंग है, जो भी टफ वाले चैप्टर्स है, डिफिकल्ट चैप्टर्स है, वो कब करने हैं हमको? अर्ली मॉर्निंग में करने हैं। जब अर्ली मॉर्निंग में सभी शांति होती है, दिमाग भी पावरफुल होता है एंड बेस्ट चलता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करो? डिफिकल्ट वाले टास्क कहां पे करो? अर्ली मॉर्निंग में करो, और जो सिंपल सिंपल है वो बाद में ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे है ना बहुत एक्सक्यूज करते हैं कि नहीं ये हुआ ना, इस वजह से मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई, ये आसपास में शोर शराबा था ना तो मैं रात तक नहीं जग पाया, मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरी स्टडी हो गई। तो अब से एक ध्यान में रखना है, सीए करना है, सीए में अचीव करना है, सीए को अचीव करना है तो सबसे पहले एक्सक्यूज करना बंद करो। वैसे बच्चे क्या करते हैं पता है? स्टडी करते हैं ना तो साथ में मूवीज चालू है या कोई सीरियल्स वेब सीरीज चालू है, वो देख देख के भी स्टडी करते हैं, कान में ईयरफोन डाल के सॉन्ग सुने सुने भी स्टडी करते हैं। बट आसपास में कोई जगह पे मैरिज है, फंक्शन है, पार्टी शार्टी है, लेट नाइट तक आवाज आ रही है ना तो उसको डिस्टर्ब करता है। अरे भाई आई वुड से आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। मैं मेरी बात करूं ना तो मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई की है। कोचिंग भले मैंने कहा किया बाहर से, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में से कोचिंग किया, बट मेरी जो लास्ट मिनट्स प्रिपरेशन है, लास्ट जो 3 to 4 मंथ्स की प्रिपरेशन है, वो मैंने सबसे पहले सबसे बेस्ट मेरे खुद के घर में रह के ही पढ़ाई की थी। और आपको पता है मेरा घर था ना, वो घर के एग्जैक्ट पास में एक मंदिर था, थोड़े दूर आगे एक स्वामीनारायण टेम्पल था, अरे थोड़ा पीछे मस्जिद थी। तो मैं जागता था ना, सबसे पहले मुझे क्या सुनाई देता था पता है? जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, अल्लाहू अकबर अल्लाह। मैंने तो बहुत शोर शराबा था, बट मेरा फोकस क्लियर था, मेरा गोल फिक्स था कि मुझे बाय हुक और क्रुक सीए करना है, सीए करके दिखाना है। तो मैंने घर पे बैठ के ही सीए की स्टडी की थी, बिकॉज मेरे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। अब आपको सपोज एकाग्रता बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पता है? स्टडी के टाइम मैंने कहा 0 डिस्टर्बेंस जोन, माने तो अपना जो मोबाइल फोन है ना उसको साइड में करो, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक व्हाइल स्टडीइंग। आपका स्टडी कंप्लीट होता है, रात को देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रात को मूवी भी देखो, आपका काम है, टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, आपने एक्शन प्लान बनाया है उस हिसाब से सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो नो मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग स्टडी, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आई वुड से जो मैसेजेस आप टाइप करने की जगह लिखोगे ना तो आपकी लेखन शैली भी बढ़ेगी। एंड लास्टली टॉप 50 AIR 50 में आने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। माने तो लाइफ में एक्सक्यूज नहीं करना है। अब एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक देखे जाता हूँ, जो इंप्रूव करना है तो मेमोरी टेक्निक। यहाँ पे किसी का एक मैसेज भी था कि सर स्टडी करते हैं याद नहीं रहता है, बिकॉज क्या दिमाग की एक लिमिटेशन है, हम आगे लेने वाले हैं। तो अब जो स्टडी करते हो ना उसमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? दिमाग कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, माने तो ऐसा लगता है कि नहीं बस अब तो बस। तो क्या करो पता है? जब भी थोड़ा टाइम होता है ना, एक वाटर बॉटल साथ में रखो, वाटर बॉटल साथ में रखो, थोड़ा टाइम होता है ना, ड्रिंक द वाटर। अरे पानी नहीं पीना है, ज्यादा फ्रेश होना है तो नींबू पानी पियो, ग्लूकॉन डी पियो, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आपको लगता है दिमाग स्टॉप हो गया है, स्टक हो गया है, व्हाट यू नीड टू डू, ड्रिंक द वाटर। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आपका दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आप वाटर पीते हो, स्टक हो गए हो, वाटर पीते हो, अरे एग्जाम में भी क्वेश्चन में याद नहीं आते हैं तब भी आप वाटर पीते हो, तो आपका दिमाग, आपकी नसें जो है ना काम करना शुरू कर देती है। तो एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल फिक्स कर दो, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2-3 सिप पी ही लेना है, दैट्स इट। लास्टली एक आपको एक्सरसाइज देके जाता हूं, एक क्या है, ज्ञान मुद्रा है। अब
ये जो करोगे ना बच्चों के लिए खास है। एवरीडे मॉर्निंग में भले 2 मिनट का ज्ञान मुद्रा आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि पहली 2 उंगली को रखना है, ध्यान जैसी परिस्थिति है, इसमें सिर्फ 2 मिनट बैठोगे ना मन शांत हो जाएगा। देन आफ्टर दूसरी एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हो पता है, हाकिनी मुद्रा। 5 फिंगर आमने सामने रख दो विद सर्टेन डिस्टेंस और थोड़ा प्रेस करो उसको, और थोड़ा प्रेस करो। इससे क्या हो सकता है पता है, आपकी जो एनेक्साइटी है, व्हाट बीपी का जो लेवल है वो कंट्रोल में आएगा एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये जब भी आपको लग रहा है ना नहीं मेरा दिमाग घूम रहा है, कोई जगह पे घूम रहा है, ये हाकिनी मुद्रा करना, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। भले 2 मिनट करते हो, एनी टाइम करते हो। लास्ट वन, उत्तर बोधि मुद्रा। ये इससे क्या मिलता है, इससे क्या है, पहला जो आपका थंब है, पहली जो अंगूठी है, वो दोनों को आमने सामने थोड़े डिस्टेंस पे रखने हैं। बाकी की जो 3 उंगलियां है ना उससे आपको एक चेन बना लेनी है। इस तरह से आप करोगे ना तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एंड माने तो ये जो 8 चीजें आप फॉलो करते जाओगे उसमें इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन के लिए एक छोटी सी रिसर्च है ना, वो क्या कहते हैं कि 8 सेकंड से ज्यादा किसी का भी मन टिकता नहीं है। गोल्ड फिश के लिए क्या है 9 सेकंड है, माने तो 8 सेकंड में दिमाग घूम जाता है। ये करोगे ना जो आगे एक्सरसाइज बताई, यू विल बी एबल टू बेटर फोकस द सैम। बट सपोज मुझे स्टडी करनी है, मेरे मन को कंसंट्रेटेड रखना है, तो क्या करना है, एक छोटा सा, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तब से हम ये सुन के आ रहे, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, ये सब कुछ हम सुनते आ रहे हैं, उसको फॉलो करना है। काम करते हो ना जीरो डिस्टर्बेंस में ही काम करो, खेलते हो तो जीरो डिस्टर्बेंस में, खेलने के टाइम खेलना ही है, वर्क के टाइम वर्क, नथिंग एल्स। अब जो मैं है ना आपको 5 जो लेसन्स देने चाह रहा हूं ना, वो जो सपोज आप में दिख गया तो समझो यू आर स्टेपिंग द स्टेप्स ऑफ व्हाट अचीवर, आप सक्सेस हासिल करने वाले हो। ये 5 क्वालिटीज जो आप में दिख गई, ये आपने दिखा दी तो समझो आप अचीवर बनने वाले हो। मुझे सीए की जर्नी में, सीए की ट्रेंड में बैठना है, मैंने इंप्रूव तो कर दिया, ये 8 स्टेप्स फॉलो करूंगा तो मैं इंप्रूव करते जाऊंगा, बट मेरा फोकस कैसे रखना है। अभी का क्या है, जमाना क्रिकेट का है, तो क्रिकेट की एक आपको बेस्ट स्टोरी कहता हूं, बट ज्यादा लंबी नहीं कहूंगा, टुक में ही, दैट इज शॉर्ट में ही उसको कंप्लीट करूंगा। तब 1983 की बात है, कपिल देव वाज द कैप्टन एंड द इंडियन क्रिकेट टीम वाज गोइंग टू व्हाट लंदन फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग व्हाट वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए जाने वाला था। अच्छी तरह से सुनना, ये जो 5 चीजें आप में आ गई तो समझो आप कुछ भी ठानोगे ना, कुछ भी गोल बनाया है ना, यू विल बी एबल टू अचीव द सेम। इट इज अ सीक्रेट टू अचीव द गोल। कपिल देव घर से निकला लंदन जाने के लिए। हम भी, हमारी एग्जाम्स होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो पेरेंट्स है, गुरुजी है, उसके ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। कपिल भी घर से निकला, उसने क्या किया, अपने माता जी है उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके वो घर से निकला। उसकी माता जी ने उसे कहा बेटा जीत के आना। कपिल ने कहा जी मॉम मैं जीत के आऊंगा। माने तो एक कपिल का गोल बन गया, मुझे वर्ल्ड कप फाइनल जीत के आना है, वर्ल्ड कप जीत के आना है, दैट्स इट। ये उसका एक क्या बन गया, गोल बन गया। ये गोल के साथ वो घर से निकला है। अब ध्यान में रखना किसी कैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एक गोल के साथ वो घर से निकला है एंड एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे चारों ओर भीड़ थी। किसके लिए पता है, सभी को ऑटोग्राफ्स चाहिए थे, डायरियाज लेके खड़े थे। बट उन्होंने डायरियाज किसको दी पता है, जो टीम का कोच था मिश्रा जी। अब मिश्रा जी को उन्होंने डायरियाज दी और सभी प्लेयर्स के सामने कहा कि हमारे लिए ऑटोग्राफ लेके आना। मिश्रा जी सरप्राइज हो गए कि पूरी टीम यहां पे है एंड आप हमको कह रहे हो कि हमारे लिए ऑटोग्राफ ये डायरियाज में लेके आना। पब्लिक ने क्या बोला पता है, पब्लिक ने बोला कि हमको ये इंडियन क्रिकेट टीम के ऑटोग्राफ्स नहीं चाहिए जिन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है, हमको तो जो वेस्ट इंडीज का स्टार प्लेयर्स है ना विवियन रिचर्ड्स, उसका ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे कंटेंट से पूरी बेइज्जती कर दी। इसकी जगह दूसरा होता तो क्या करना है,
उसके सामने बहस करता है। एक ये फर्स्ट लेसन आपको मैं यहाँ से सिखा रहा हूं कि लाइफ में लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, ये बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। आप अच्छा करोगे तो भी बुराइयां निकालेंगे, बुरा करोगे तो भी बुराइयां निकालेंगे। तो ध्यान में रखना, लोग जब भी आपको क्रिटिसिज्म करें ना, एक ही चीज करनी है, सपोज वो सही है तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं है, हमारा फॉल्ट है तो एक्सेप्ट करो। बट सपोज वो गलत है, गलत बोल रहे हैं, ऐसा हमने नहीं किया है, गलत बोल रहे हैं, गलत निंदा कर रहे हैं, गलत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ना, व्हाट, बहस मत करना, उसको सिर्फ क्या करना, इग्नोर करना। ये सभी वो लोग क्यों कर रहे हैं? आपका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। माने तो कोई भी पर्सन दुनिया में आपकी निंदा करे, क्रिटिसिज्म करे ना, तो मगज में मत डालना, दिमाग में मत डालना, उसको सिर्फ क्या करना, इग्नोर करना, अदरवाइज ध्यान से भटक जाओगे। तो कपिल ने भी उसको इग्नोर किया, बिकॉज उसका गोल फिक्स था, मुझे वर्ल्ड कप फाइनल जीतना है। अब वो पहुंचे लंदन। अब लंदन में उसको क्या थे, स्टेडियम के एंट्री के पास मिले, स्टेडियम की एंट्री से। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, एंट्री पास में क्या लिखा था पता है? एंट्री टू ऑल स्टेडियम एक्सेप्ट लॉर्ड्स। अब लॉर्ड्स स्टेडियम है ना, वहां पे फाइनल होने वाला, वहां पे ही इंडियन क्रिकेट टीम को एंट्री नहीं है। तो आई कैन से सेकंड टाइम बेइज्जती की। अब दिमाग जाएगा, हम आए हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, हम आए हैं सीए करने के लिए, और सीए फाइनल का एग्जाम में ही हमको अपियर करने का मना कर दे, तो बट ऑब्वियसली दिमाग तो जाएगा ही। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल मैच जहां पे भी होने वाला था, तो वहां पे एंट्री ही मना कर दी। कपिल कुछ नहीं कहता है, बिकॉज हमको ये एक चीज लर्न कर ली है हमने, इफ समबडी क्रिटिसाइज यू, इफ इट इज ट्रू एक्सेप्ट, इफ इट इज रॉन्ग क्या करो, इग्नोर करो, बट बहस मत करना। ये पहली चीज लेके हम जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रैक्टिस मैचेस स्टार्ट हुए। इंडिया की पहली प्रैक्टिस मैच में परफॉर्मेंस आया, इंडिया जीत गया। दूसरी प्रैक्टिस मैच इंडिया हार गया। तीसरी प्रैक्टिस मैच इंडिया हार गया। चौथी प्रैक्टिस मैच इंडिया हार गया। माने तो 4 प्रैक्टिस मैच का रिजल्ट क्या आया पता है? इंडिया 1 में जीता और 3 में हार गया। अब अच्छी तरह से सुनना, दूसरी चीज लर्न करने को मिलने वाली है यहां से। तब उसका जो रिपोर्टर था ना, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, उसने कपिल को पूछा, सर what do you say about your performance in these practice matches and how you are seeing your team into the World Cup final? ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा, क्या आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कपिल ने क्या आंसर दिया पता है? सर, I am seeing that Indian cricket team is winning the World Cup. 4 में से 1 मैच जीता है, 3 हार गया है, तो भी वो बंदा क्या बोल रहा है? नहीं, मैं देख रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम इज विनिंग द वर्ल्ड कप। लेकिन सो व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज आपको जो लाइफ में चाहिए ना, गोल अचीव करना है तो दूसरी चीज चाहिए, वो क्या है? कॉन्फिडेंस चाहिए। दुनिया चाहे जो भी बोले, आपका गोल क्लियर है, नहीं मैं ये करके ही दिखाऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन उसको पूछा पता है, कि कल आप रानी साहबा को मिलोगे तो आप उसको क्या कहोगे? कपिल ने कहा, आई विल टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हर टू विन द वर्ल्ड कप। मैं उसके ब्लेसिंग्स लूंगा, किसके लिए? जीतने के लिए। आई कैन से सेकंड टाइम, और बिग 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 कॉन्फिडेंस लेवल। माने तो दूसरी चीज हमने लर्न की, लाइफ में गोल अचीव करना है तो क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। ये तो ठीक है, बट कपिल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, तब उसका जो कोच है ना, वो पास में खड़ा था। वो कोच ने बोला, कपिल इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंक रहा है, थोड़ा जमीन पे आ, हवा में मत उड़। व्हाट? बिकॉज अभी तक प्रैक्टिस मैच में 4 में से 1 ही जीता है, एंड रिटर्न टिकट भी कंफर्म है, और फाइनल के स्टेडियम में तो एंट्री भी नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं ये जीत जाऊंगा। अब अच्छी तरह से सुनना, तीसरी चीज लर्न करने को मिलेगी। कपिल ने बोला, सर बुरा ना लगाओ ना, तो एक छोटी सी स्टोरी कहूं मैं आपको। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, बोलो कपिल। तब कपिल कहता है, सर मैं छोटा बच्चा था ना, छोटा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट खेलता था, स्टेट खेलता था, नेशनल खेलता था, रणजी खेलता था, मेरी माँ मुझे एक ही वर्ड कहती थी, बेटा जीत के आना। व्हाट? नो ऑल द बेस्ट, नो बेस्ट ऑफ लक, नथिंग, सिर्फ एंड सिर्फ क्या है? जीतना है।
सर मैं ये जीत का वर्ड है ना, मैं छोटा था ना तब से सुन के आ रहा हूं, अब जीत है ना मेरे दिमाग में से निकलती नहीं। माने तो थर्ड थिंग आपको जो चाहिए ना, वो क्या चाहिए पता है? फैमिली सपोर्ट, फैमिली इंस्पिरेशन। अब कोई कोई बच्चे कहते हैं सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली इंस्पिरेशन नहीं करती है, फैमिली इंस्पायर नहीं करती है। अरे भाई तू कुछ अचीव करके तो दिखा, फाउंडेशन में क्लियर करके दिखा, इंटर में क्लियर करके दिखा, सीए बन के तो दिखा। फैमिली फुल सपोर्ट करेगी। तो थर्ड चीज चाहिए फैमिली सपोर्ट। विद दिस वन एक्चुअल मैच स्टार्ट होते हैं, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लेते हैं। पहली मैच आई है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। अभी तक इंडिया ने एक भी मैच नहीं जीती है, एंड पहला मैच वो वर्ल्ड कप में जीत जाता है। दूसरी मैच आती है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, एंड उसमें भी इंडिया जीत जाता है। माने तो इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीता था, बट अब कपिल का फोकस था, उसका गोल क्लियर था, मुझे वर्ल्ड कप जीत के लाना है। तो पहली दो दो मैच इंडिया जीत जाता है। तब कपिल तो ठीक है, वो फुल्ली फोकस था, बट उसके जो साथीदार है ना, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। अरे लेट नाइट तक पार्टियां साटियां मनाने लगे, लेट नाइट तक जागने लगे, प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। नहीं, कपिल हमारे साथ है, वो हो जाएगा। वट वो माने तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ध्यान में रखना, चौथा लेसन, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत 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 बुरा है। डाउन टू अर्थ रहना, आपने कुछ हासिल कर दिया ना तो हवा में मत उड़ना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। तो चौथा लेसन। इंडियन क्रिकेट टीम भी क्या थी, ओवर कॉन्फिडेंस में आती थी। इस वजह से थर्ड मैच हुई ना, थर्ड मैच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वो हार गया। चौथी मैच हुई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड इंडिया फिर से हार गया। माने तो 4 मैच में से 2 जीता 2 हारा। तब सभी को थोड़ा नहीं तो क्या है, जमीन पे रहना पड़ेगा। तो अब कपिल क्या करता है पता है? जो नेक्स्ट मैच है ना, वो डिसाइडिंग मैच होने वाला है। इंडिया जीतेगा तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आउट, बाहर। दैट इज वर्ल्ड कप से बाहर, पूरा गोल का सत्यानाश हो जाएगा। तो कपिल क्या करता है, रात को एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को अपने कमरे में बुलाता है। वहां पे उसको चारों 4 मैच दिखाता है, कहां पे बैटिंग में प्रॉब्लम है, किसकी फील्डिंग में प्रॉब्लम है, किसकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है, किसकी कैचिंग में प्रॉब्लम है, किसकी विकेट कीपिंग में प्रॉब्लम है। माने तो जो जो भी गलतियां है ना, वो ढूंढते हैं एंड अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे काम करना है अब आगे। एंड एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं, अब से कपिल देव फोर्थ डाउन आएगा। माने तो 4 विकेट गिरेगी ना, उसके बाद कपिल देव बैटिंग में आएगा। तब तक कपिल देव बैटिंग में नहीं आएगा। पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मैच है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, डिसाइडिंग मैच फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। जीता तो वो क्या है, अंदर, हारा तो व्हाट, बैक टू इंडिया। एंड दैट मैच वाज अगेंस्ट व्हाट, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को आगे हरा दिया था। तो सभी ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे ना, नहीं, बट अब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थे, फुल्ली फोकस थे, बिकॉज हार गए थे। तो अब नेक्स्ट मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इंडिया की बैटिंग आई, अच्छी तरह से देखना, 0 पे 1 विकेट, 3 पे 2 विकेट, थोड़ा स्कोर ले रहे हैं। अब 5-10 मिनट में हम कंक्लूड करने वाले हैं। 5वीं चीज लर्न करने के बाद 9 रन पे 4 विकेट गिर गए। माने तो सबसे बुरा परफॉर्मेंस। अब जो फिक्स था ना, 4 विकेट गिरेगा तो कौन आएगा, कपिल। कपिल बैटिंग के लिए आया एंड 17 पे 5वां विकेट गिरा। कौन आउट हुआ होगा पता है, कपिल या सामने वाला? से सामने वाला आउट हुआ। कपिल अभी टिका है, बिकॉज क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, आपको सपोज गोल अचीव करना है ना, तो आपको क्या है, पिच पे डटे रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, तो ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। एंड सपोज कोई क्रिटिसिज्म करता है ना, तो आपके दिल में क्या है, आंधी आ जानी चाहिए कुछ अचीव करने का। पब्लिक कमेंट स्टार्ट हो गई कि ये कैसी इंडियन क्रिकेट टीम को आप लेके आए हो, जिसको क्या है कुछ आता ही नहीं है, गिल्ली डंडा वाली टीम को लेके आए हो या क्या, ऐसा पब्लिक कमेंट स्टार्ट हो गई। हमने आगे लर्न किया, कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो क्या करो, सिर्फ एंड सिर्फ उसको इग्नोर करो, बट दिल में आंधी आ जानी चाहिए कुछ अचीव करने की। कपिल भी फुल्ली फोकस के साथ अब मेहनत करता है, पब्लिक कमेंट्स को इग्नोर करता है एंड 4-6 मारने का शुरू कर देता है एंड 77 पे 6ठा विकेट गिरता है। कौन आउट हुआ होगा पता है,
कपिल या सामने वाला, द बैटर वुड बी व्हाट, सामने वाला। कपिल अब क्या कर रहा था, वो फुल्ली फोकस था, बैटिंग कर रहा था। जो भी सामने वाला आता था उसको सिर्फ एक ही कहता था, पिच पे डटे रहे, बस विकेट संभाल, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। से वो आगे बढ़ा 78 पे 7वां विकेट, स्टिल कपिल इज ऑन द बैट। कपिल 4-6 मारने का शुरू करता है 140 पे 8वां विकेट एंड 164 रन हो गए इंडियन क्रिकेट टीम के। 8वां विकेट जो 9 रन पे 4 विकेट था वो 164 पे पहुंचा दिया कपिल ने एंड कपिल की सेंचुरी हो गई। फिर से कपिल 4-6 मारने का शुरू करता है। कपिल के 150 रन हो गए एंड नाउ द कपिल इज नियर टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 171 एंड कपिल का भी स्कोर हुआ था व्हाट 171। कपिल का गोल फिक्स है, मुझे बाय हुक और क्रुक जिताना है, दैट्स इट। इसीलिए वो क्या कह रहा था, मेहनत कर रहा था, लग रहा था। नाउ 1 रन कर देगा ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा एंड सभी की निगाहें थी कि अब क्या होगा। बाय डूइंग ओनली 1 रन उन्होंने वर्ल्ड कप क्रैक कर दिया। कपिल देव ने 175 रन किए, इंडिया के 266 पे 8 जिम्बाब्वे, विकेट पे विकेट गिरे, कब ऑल आउट हो गया पता ही नहीं चला। विद दिस वन इंडिया जीत गया विद द बिग मार्जिन। अब जो 5वीं चीज लर्न करनी है वो यहां से मिलेगी। नेक्स्ट डे नहीं बट सेम डे हाई कमिश्नर की पार्टी थी। अब पार्टी में सीनियर जर्नलिस्ट ने कपिल को पूछा, नाउ वर्ड पे फोकस करना, नाउ यू विल रिटर्न विद द हैप्पी फेसेस। 5 में से 3 जीत गए, 2 हार गए, मींस 3 जीत गए, अब तो आप क्या है राजी राजी वापिस जाओगे, ऐसा जर्नलिस्ट ने पूछा किसको, कपिल देव को। बट हु इज रिप्लाइंग पता है, लिखा है टीम मेंबर्स बोलते हैं Kapil will return with the happy faces only when he is holding the World Cup in his hand. कपिल ये से यहाँ पे नहीं जाने वाला है। कपिल राजी होके कब जाएगा, जब उसके हाथ में क्या है, वर्ल्ड कप है। कौन बोल रहा है, नॉट कपिल बट उसके टीम मेंबर्स। माने तो आपको सपोज अपना गोल अचीव करना है, 5वीं चीज जो जरूरी है ना, पहली 4 एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या चाहिए, बोलो कमेंट में बोलो, सबसे पहले क्या चाहिए। आंसर मिल रहा है मुझे। ओके, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एनीवन प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मुझे कमेंट्स नहीं दिख रही है, कैन आई सी, यस ओके। गोल फिक्सिंग, वो तो ठीक है, गोल तो फिक्स होना ही चाहिए, वो तो गोल नहीं है तब तो कुछ नहीं होगा। अरे यार फास्टली बोलो, सबसे पहले क्या चाहिए, आर यू लिसनिंग, प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, सबसे पहले क्या चाहिए। कॉन्फिडेंस, यस कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। फिर फैमिली का सपोर्ट चाहिए, देन एनीवन, सबसे फर्स्ट थिंग फोकस। वो तो बट ऑब्वियस है, फोकस तो चाहिए ही ना यार। कोई क्रिटिसिज्म करे ना तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। मान तो फर्स्ट थिंग क्रिटिसिज्म करे तो इग्नोर करो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, फैमिली का सपोर्ट रखो। एंड 5वीं चीज जो लास्ट है, टीम मेंबर्स जो हमारे है ना, आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास के कलीग्स हैं, वो सभी को रियलाइज होना चाहिए कि नहीं ये बंदे में कुछ है, ये कुछ इस तरह से मेहनत कर रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है ये कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाएगा। ऐसा किसको लगना चाहिए, आसपास के लोग को ऐसा रियलाइज होना चाहिए। उनको पता है कि हम थोड़ा कुछ अचीव करते हैं ना तो सबसे पहली जेलसी होती है ना, वो किसको होती है, पड़ोसी को। अरे भाई उसको जेलसी न हुए ना तब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है। बट आसपास के लोग जेलस होंगे, व्हाट, आपके ऊपर बिलीव करेंगे नहीं ये बंदे में कुछ दम है, तब समझना कि यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस। तो ये 5 चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी को हिस्ट्री पता है तो हम आगे हिस्ट्री नहीं ले रहे हैं।
ये जस्ट अ सेकेंड, ये 5 चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 चीज आपने दिखा दी तो समझो यू आर on the steps of what success। and ये सभी पीपल कहते हैं test the success once, tongue once more। एक बार आपको सफलता मिल गई ना तो फिर आपको क्या लगेगा है, आने दो आने दो आने दो। जस्ट लाइक जानवी है, तो जानवी ने सीए इंटर में IR4 अचीव किया, तो अब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं फाइनल में जानवी का कौन सा रैंक आएगा, फर्स्ट आएगा। मैंने तो सक्सेस आगे बढ़ते रहो। लास्ट थिंग, भगवान को प्रार्थना करनी है ना। हम सभी को पता है ये एग्जाम्स आर व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेइंग एंड हार्ड वर्क। भगवान को प्रार्थना करनी है ना, तो ऐसे प्रार्थना करो कि सो दैट भगवान आपके अलावा किसी की सुने ही नहीं। एंड भगवान को ऐसे प्रार्थना करो कि उसके हाथ में ही सब कुछ है। एंड सेकेंड थिंग, जो सपोज आपको मेहनत करनी है ना, तो ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि सो दैट रिजल्ट आपके हाथ में है। इस तरह से मेहनत करो। कोई कोई बच्चे कहते हैं सर अब तो बहुत टाइम हो गया है, मुझे कम बैक करना है, मैं क्या करूं। तो ध्यान में रखना 3 to 4 months आर इनफ। व्हाट, 3 to 4 months आर इनफ इफ यू गिव योर 100%। आप 100% दोगे, 3 to 4 months आर वेरी मच इनफ टू कम बैक इन द CA study। Lastly, I would like to conclude my session with the one thing only। ब्रीफली रिकैप्चुलेट करते हैं, सीए जर्नी में आगे बढ़ना है तो फियर एंड फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल दो। क्या करो, इंप्रूव करो, 8 स्टेप्स वो फॉलो करो एंड फोकस की स्टोरी के 5 चीजें दिखा दो दुनिया को, तो आप लास्टली ये कह पाओगे व्हाट, बिना मुहूर्त आए थे, बिना मुहूर्त जाना है। क्या बोलोगे आप दुनिया को, बिना मुहूर्त आए थे, बिना मुहूर्त जाना है। कोई मुहूर्त देख के जन्मा है, सुनो, कोई मुहूर्त देख के जाएगा नहीं। तो बिना मुहूर्त आए थे, बिना मुहूर्त जाना है। लाइफ में कुछ ऐसा कर, व्हाट, लाइफ में कुछ ऐसा कर, खुद पे भरोसा कर, सो दैट भगवान तेरी तकदीर लिखने से पहले बोले कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, सीए बनना है, अरे सीए ग्रांटेड, ऐसा भगवान बोले। थैंक यू वेरी मच। ये फॉलो करोगे तो गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एंड लास्टली, सॉरी, वन सेकेंड, अब क्या है, आई होप सभी को मजा आया होगा सेशन में। अब क्या है, मैं है ना, एक मेरी यूट्यूब की चैनल भी है, जो सपोज पॉसिबल है तो स्क्रीन के ऊपर दिखा दो प्रीति, लास्ट जो पेज था ना। मैं क्या है, बहुत सारे मोटिवेशन सेशंस लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइफ इंप्रूवमेंट सेमिनार। देन आफ्टर KGF सीरीज हमने एक नई सी स्टार्ट की है, कर्म करके गोल पे फोकस कर, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट सेमिनार। माने तो लेडी की रिस्पेक्ट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो पॉसिबल है तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है विजय CA मोटिवेशन, आप लिखोगे कंटिन्यूअसली, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, विजय CA मोटिवेशन कंटिन्यूअसली लिखोगे। अभी अभी शुरू की है, भले वैसे रिलीजियस तो मैं 2016 से कर रहा हूँ इवेंट, बट 1.5-2 महीने से शुरू किया। आपको लॉट्स ऑफ कंटेंट रिलेटिंग टू मोटिवेशन मिलेंगे, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना। एंड प्लीज एनी क्वेश्चंस कृतिका? Yes, so we have few questions for you from the physical attendees. Okay. The first question being, how to not panic before exams? Sorry? How to not panic before exams and how to utilize those 1.5 days efficiently? Okay. अब पैनिक नहीं होना है ना, तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो मन को शांत रखना है। That's it. दुनिया डराएगी, सब कुछ करेगी। मैंने आपको 3 मुद्रा दी, वो 3 मुद्रा करोगे ना, तो ही आप क्या है, पैनिक नहीं होगे, पैनिक से बच पाओगे। एंड सेकेंड थिंग मैंने कहा ना, गैजेट्स नहीं, कोई दूसरे के साथ बातचीत नहीं। लोग कहेंगे नहीं ये आज का, अब तो ये जो पेपर है ना वो बहुत टफ है, हम उसको सुनना ही नहीं है। हमने मेहनत ही ऐसी करो, बेस्ट मेहनत करो, तो आपको पैनिक आएगा ही नहीं। माने तो आउटसाइड का जो सराउंडिंग्स है ना उसको इग्नोर करो, ये जो थोड़ी बहुत मुद्राएं कही है वो उसके ऊपर फोकस करो, तो डेफिनेटली पैनिक नहीं रहेगा। एंड सेकेंड थिंग वाज,
What is the most underrated aspect of CA exam preparation that students overlook? Couldn't get in point. The most underrated aspect that CA students don't take into consideration while preparing. Okay. वो स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स आई वुड से डिफर होगा. मेन चीज है ना, वो मुझे जो लगती है, जो बच्चे नहीं है, बच्चे के पास नहीं है, वो फोकस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, गोल नहीं है. करने के खातर आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि चलो सर्कमस्टेंसेस अच्छा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, चलो लक आजमा लेते हैं. तो ऐसा मत करो. आ गए हो ना, तो क्लियर गोल रखो, मेहनत करो, फुल फोकस के साथ मेहनत करो, गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी. तो मेन थिंग है ना, वो क्या है, क्लैरिटी की है. दैट इज जो ओवरलुक करते हैं बच्चे. अरे फिक्स ही नहीं किया है कि मुझे अचीवर बनना है, वो एक मेन प्रॉब्लम है. और थोड़ी बहुत जो हताशा आती है, दैट इज आई वुड से फेल्योर आता है ना, तो उससे क्या है, पीछे हट जाते हैं. अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं था, 1 ही घंटे का टाइम था, सो आई कुडंट टेक दैट मच स्टोरी. बट लाइफ में चाहे कुछ भी हुए ना, कुछ भी ये मूवी की स्टोरी है, उसमें ही है. सपोज आपको लाइफ में फेल्योर पे फेल्योर मिले ना, उससे हताश मत हो, पीछ पे डटे रहो. बिकॉज जब तक आप सीए करते रहोगे ना, भले तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, पांचवा अटेम्प्ट है, बट सीए बन जाओगे ना, तो मैंने पहले कहा उस हिसाब से सब कुछ आप हासिल कर पाओगे. So thank you so much, sir, for your session. I want to express my heartfelt gratitude to you for this incredible and energetic session on transforming aspirants into achievers. Your insights, passion, and practical advice truly made a difference on how we view this journey. And achiever banna hai is not a question, it's a statement for us with a full stop. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Now let's keep the momentum going as we hear from another inspiring leader, CA Vinod Agarwal, the chairman of WICASA Nagpur. He is a highly respected professional in the field of chartered accountancy. With his vast experience and deep knowledge of the profession, he has mentored and guided countless CA aspirants. His contribution to the profession and his commitment to empowering the future CA generation is truly commendable. Please join me in welcoming CA Vinod Agarwal, the chairman of WICASA Nagpur. Over to you. Thank you. Thank you for a wonderful introduction. First of all, I would like to really thank WIRC and WICASA WIRC. WIRC probably in the leadership of CA Ketan Sayya sir, Vice Chairman CA Piyush Chandak sir, then Secretary Treasurer CA Fenil Shah sir, who took out their times. Then most importantly, Chairman WICASA WIRC CA Jiten Saglani sir, for planning such a wonderful event and right at the time of examination, so that our students can probably understand how to plan their studies so as to be achievers. See, passing C exam is not that difficult, I feel, but yes, to become numero uno or to come in the merit list is definitely something that need to be meticulously planned. And I suppose I feel Piyush Chandak sir in his introductory remark very rightly said, सीए की एग्जाम इतनी आसान नहीं है और आज भी हम लोग को भी ना गूज़बम्प्स आते हैं. कभी भी रात को सपना आता है कि अरे मैं सीए फाइनल में था, मेरा एग्जाम का रिजल्ट क्या हुआ, मैं पास हुआ, फेल हुआ, व्हाटएवर. एंड आई नरेट यू वन फनी स्टोरी ऑफ माइन. आई वोक अप वन नाइट फ्राइटेंड कि मैं रिजल्ट फेल हो गया, और जब मैं उठ के बैठ के देखा तो मेरे पास में मेरी वाइफ सोई हुई है और मेरे बच्चा सोया हुआ है. तो देन आई कुड रियलाइज कि यस, आई एम ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यस, आई नीड नॉट टू पैनिक नाउ. So going forward, I mean, we are really thankful to CA Vijay Thakkar sir for his talks, and I think even of our students, if they can take 50% of the energy from Vijay Thakkar sir, then I don't think there is any point they'll not succeed. I think they'll be able to, I mean, come into the merit if even if they are able to take 50% of the energy of Vijay sir. He rightly said that he narrated through various success stories, and he linked the success stories with
I mean, cricket and movie, which is doing very much favorite of all the students. And he used those stories to make the students understand that every movie, if you want, if you wish, that means watch it properly. That is not only a fiction, but also it narrates some or the other kind of success story or motivation or that teaches you well. He, in his presentation, if you might have carefully observed, he gave a very good lesson that do all your difficult learnings in the early morning. And friends, I am a better example of it. And I'll just narrate you one more incident of my life. I was frightened of law when I was in CA final. मैंने सुबह उठ के ना 5 सेक्शंस अलग अलग जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगते थे वो पढ़े, और अनफॉर्चुनेटली ऑल दोस 5 sections came in my CA final examinations. So whenever you learn any difficult topics in the morning time, no, I am in my personal life very beneficiary of it. Vijay sir also defined 3 mudras, and I'll tell you frankly, even if you see now, I am exercising the same. So that is, yes, practically that is tremendous, and it will give you very good results. For students, whatever Vijay sir said, I mean in mudras and whatever, कि आप सुबह पढ़ो, so that was fantastic. To summarize, I'll say that means we can go with 6 P's so as to make our exam successful. Those 6 P's for me are purpose. That means we should have an aim. Then we should have a plan. Second P is planning. Third P is perseverance. Yes, perseverance is very important. You need to have patience and you need to be dedicated to your studies. Then preparations. Yes, most important things. You need to have all the preparations. Then it is positivity. Yes, Vijay sir told it several times that if you are positive, 90% of the battle is won. Then last is passion. Until and unless you have passion for anything, you won't be able to make it out. So have passion, have that jill, and all the best for your examinations. And we all see you as future chartered accountants. And in few days, we will be happy to see you as chartered accountants amongst our fraternity. Thank you. Thank you all. Thank you, Vinod sir, for the amazing perspective. You have truly set the bars high for all of us. Now it's the time to hear from one another power speaker. It's an absolute honor to introduce our esteemed guest for today's event, CA Pragna Bum, the chairperson of WICASA Pune. Thank you so much. विनोद सर को सुन के और सब लोगों को सुन के मुझे ऐसे लगा, विजय जी को and everyone, that I'm again a CA student. So thank you so much WIRC WICASA for organize this program, and we at Pune WICASA are glad that we could join and we all could simultaneously benefit from all this program. So not taking further time, जितना पढ़ना जरूरी है उतना आई फील कि जब वो पेपर पे जाता है दैट इम्पैक्ट ऑल्सो मैटर्स. सो द टुडे सेशन विच इज अपकमिंग सेशन इज की टू इफेक्टिव पेपर राइटिंग. आपने अगर सोचा है कभी कि आप 4-4.5 महीने जब पढ़ते हो स्टडी लीव लेके एंड यू टेक 14-16 hours and you study and then you only get 3 hours to put it into writing. So to understand how to effectively put whatever your learning is in 3 hours, that is also a skill which you need to learn. So by today's session, I'm sure Bhushan sir would be covering कि क्या लिखना चाहिए and आप जो बोलना चाहते हो और जो पेपर चेकर का mindset है, are you really writing it, and the way you are writing, how much should be presented. And in our curriculum, 1 मार्क से भी इंसान का फ्यूचर चेंज हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट. 4-4.5 महीने और आपकी जितनी भी मेहनत है, यू ओनली हैव 3 hours to put it into writing, and that is how the examiner also judges you. You are not a CA student anymore. For them, you are somebody who's written a paper. So I'm looking forward to attending Bhushan sir's tip. Every CA is also a student for one or another exam. So I also hope to take few tips from him how to
correctly and effectively write papers के लिए. Thank you so much. So over to yeah. Thank you, Pradya ma'am, for your insights and your guidance. Thank you once again for your invaluable contribution to today's session. Your dedication to mentoring and helping students succeed shines in everything that you do. And now for our final session today, we have CA Bhushan Gosar, who will be speaking about the key to effective paper writing. Yes, you heard that right. The key to actually survive and thrive in that exam hall. If you have ever heard your heart race thinking about writing those papers, this session is going to make you feel much more prepared. To introduce our next speaker, I would now like to invite Yojan Nahar on the panel. Thank you, Sadaf. Good evening, everyone. I am Yojan Nahar, Managing Committee Member of WICASA WIRC, and it gives me immense pride and genuine excitement to introduce someone who is not just a powerhouse of knowledge, but a true inspiration in the world of chartered accountancy. CA Bhushan Gosar, sir. A chartered accountant, MCom, and SET qualified in commerce, and since then his journey has nothing been less than extraordinary. But what truly sets him apart is his deep interest in teaching. With over 12 years of experience, he's become a name synonymous to excellence in the classes. As a leading faculty member at Mindspark Academy in Nashik, he specializes in law and strategic management subjects at the CA intermediate level. Subjects may fear, but under his guidance, they become simple, clear, and even fun. His style is not about just teaching, it's about transforming. His ability to break down complex concepts into digestible, his real-world knowledge has helped countless number of students to not just pass, but excel. We heard CA Prasanna Surana acknowledging him regarding the same. And if that wasn't impressive enough, he's also a professional fitness enthusiast. Yes, you heard that right. A perfect example of balance, discipline, and determination. Values that shine both in his life and in his classes. We're absolutely honored to have him with us. So get ready for a session that's going to be informative, inspiring, and unforgettable. Please join me in giving a very warm welcome to the one and only CA Bhushan Gosar, sir. Thank you for the nice introduction. Can I share my screen? Is it? Yes, it is sharing, right? Yes, sir, it's visible. Yes. I'll make my session very brief because we are already running late. So, but I'll cover all the things and I'll keep it open for discussion also. So the time is not a constraint to me, but to all the participants and committee members. So I'll keep it very brief. Firstly, I'll thank ICAI, WIRC and the team WICASA for giving me the opportunity to speak for paper presentation. So I'll directly come to the topic. My presentation is divided into mainly three parts, which you are seeing in a different colors. And for your information, this is not a chat GPT or AI made a PPT. I have made it myself, covering all the points so that generally I'm very touch with the students. So students come with different problems कि आप पेपर में हम लोग ने ये लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं मिले, हम लोग ने ऐसा लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं मिले. So briefing it all, I'll try to cover each and everything. So सबसे पहले ना हम लोग के हाथ में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आता है. I'll brief it to the paper presentation. बाकी के भी पॉइंट्स मैंने लिखे दैट आई कवर सबसे लास्ट में. सबसे पहले हम लोग के हाथ में पेपर आता है और हम लोग का सबसे पहला गोल होता है टू कंप्लीट दैट पेपर इन 3 hours. और पूरा पेपर नहीं लिखोगे तो एक सिंपल रूल है, इफ यू write the paper, say for example you have written 70 marks, 80 marks, so
अच्छा स्कोर करना, 60 प्लस स्कोर करना, 50 प्लस स्कोर करना, इवन पास होना becomes very 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 difficult. So those who are writing paper, सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए to complete the 3 hours paper, which many students are not able to do it. अब वो 3 hours का पेपर कैसे करना है, वो हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे. सो बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने निकाला है कि जब भी आपको पेपर हाथ में आता है, देर आर डिफरेंट मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 होएगा, 2, 3, 4, 5. सम क्वेश्चंस आर ऑफ 5 मार्क्स, some questions are of 3 marks, 2 marks, etc. So what thumb rule I have made, always you carry a stopwatch when you go for your exam. Stopwatch is allowed, yes, but smartwatches are not allowed in the examination hall. So it is always better to carry a stopwatch जहाँ पे precise आपको time दिखता है. And stopwatch में you make sure you dedicate specific time to a specific question. जैसे if I am writing a 5 marks question, maximum time which I can give to a 5 marks question is 9 minutes. कुछ 5 marks के questions ऐसे भी रहेंगे जहां पे you are able to complete that 5 marks question in, say for example, 6 or 7 minutes, 5 minutes in fact, छोटे छोटे छोटा उसका brief answer रहेगा. So save that time for thinking. A common observation which I saw in students is that जब भी पेपर हाथ में आता है, ठीक है, रीडिंग टाइम में व्हाट वी हैव टू डू वी विल सी आगे के स्लाइड्स में, बट एक जनरली होता है कि जैसे ही बच्चों के हाथ में पेपर आता है वो लोग क्वेश्चंस वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे और स्टूडेंट्स है ना अपने ईगो पे ले लेते हैं वो क्वेश्चन, स्पेशली इन अकाउंट्स. साला ये बैलेंस शीट मेरे से टैली क्यों नहीं हो रहा है? तो ये चीज थोड़ा हम लोग को अवॉइड करना है while writing exam. अगर if you have dedicated, say for example आपका कोई 10 marks का अकाउंट्स का क्वेश्चन है, maximum is your time is 18 minutes. On a higher side you can take 20 minutes. उसके ऊपर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो क्वेश्चन को. So always carry a stopwatch and make sure आप अगर हम लोग सिंपल मार्क्स में देखें तो 3 hours का पेपर होता है आपका, 1.8 minutes पर मार्क्स आपको मिलते हैं. सो जनरली एक एवरेज पकड़ते 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड मोर देन 9 minutes. और अगर कोई क्वेश्चन में आप टाइम सेव करते हो तो दैट सेव टाइम यू कैन गो फॉर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पे एटलीस्ट 1 or 2 minutes आपका सोचने में जाएगा. होएगा ही वैसा पेपर. देखो ये चीज लास्ट वाला, इफ अलोकेटेड टाइम के अंदर 10 minutes के अंदर 5 marks question you are not able to do, then move on to the next question. जितना आपने किया है, I'll show you some papers, institute का paper checking pattern, everything I'll show you. We will discuss also. Step wise marking होती है. It is not like that balance sheet tally हुआ तो marks मिल गया, law में सब लिखा है तो ही marks मिलेंगे. No, while writing provision, while writing conclusion, every step has a respective marks. So if you are not able to complete in an allocated time, then move on. अब पेपर लिख रहे हो ना, तो टाइम जो आगे जा रहा है वो टाइम रुकने नहीं वाला है. तो जितना ज्यादा टाइम आपने एक क्वेश्चन पे अननेसेसरी स्पेंड कर दिया, तो देर इज अ हाई चांस, हाई नहीं, देर इज अ फुल चांस आप कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे. तो आई विल नॉट सजेस्ट स्टूडेंट्स टू लीव क्वेश्चन. आपको जितना आ रहा है उसके बारे में आप लिखो. ऐसा तो बहुत रेयर ही होएगा कि आपको कुछ ही नहीं आ रहा है, तो ट्राई टू सिलेक्ट दैट क्वेश्चन जो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. सो दिस इज द सबसे फर्स्ट average. You take a note, you will not take more than 5 minutes to more than 9-10 minutes to a 5 marks question. हाँ, अब ये चीज आप डे 1 से आप सोच के चलो, कितना भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या कितना भी ड्रैकोनियन सब्जेक्ट है, when you are entering into examination hall, be mentally prepared कि होल पेपर इज नॉट गोइंग टू बी इजी. होता ही नहीं है, कोई पेपर इजी नहीं होता आज तक. इंस्टीट्यूट जैसे इफ आई टॉक एट सीए इंटर लेवल, यू हैव 6 पेपर्स, 6 के 6 पेपर कोई इजी नहीं रहेगा. हाँ, किसी स्टूडेंट के लिए इजी रहेगा, किसी स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर टफ रहेगा, लेकिन एवरेज कोई पेपर इंस्टीट्यूट इजी नहीं बनाता. सो यू गो विद द माइंडसेट कि भाई हाँ भाई पेपर थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट रहेगा ही,
So what we have to do, we have to search for easy question. You get every student gets 15 minutes. हम लोग को 15 minutes का reading time में देती है institute. तो उस 15 minutes में what I suggest students is to make the ranking. आप कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले लिखोगे? अब एक और मिथ होता है जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद में. नो 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 नो, there is no concept of writing the answers in sequence. I will always tell the strategy of strongest foot first. कि जो भी आपको क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है 15 मिनट्स में, यू हैव टू सर्च फॉर द इजी क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं सर्च करो सबसे पहले. अब ऐसा तो होएगा ही नहीं कि पूरे पेपर में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी इजी नहीं मिल रहे. इफ यू आर नॉट एबल टू सर्च देन यस यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 20 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं रहेंगे. 20-25 मार्क्स तो इट विल बी इजी, जस्ट यू हैव टू सर्च. तो 15 मिनट में ट्राई टू सर्च दैट क्वेश्चंस. एंड अगर व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हाइल राइटिंग पेपर, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता था, I used to read all the question. And suppose I get 4 to 5 questions कि हाँ भाई नहीं ये मेरे को आ रहा है, इसका कंक्लूजन मुझे पता है, this I can solve. मैं उधर है ना ऐसा एक स्माइली मार्क कर देता था. This was my habit. I used to draw some smileys. कि हाँ, और क्वेश्चन पेपर के बाजू में ऐसा एक स्माइली एक अच्छे से मार्क कर दिया. या आप रेटिंग दे सकते हो, रेटिंग 1, 2, 3 की. ये कोई क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट पहले 1 लिखा है तो सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे. इससे क्या होएगा, यू हैव टू स्पेंड 1 hour. जब आप लिख रहे हो ना, यू हैव ओनली 3 hours. तो 1 hour अगर बेस्ट गया ना आपका, दो पेपर इज डिफिकल्ट है, सबसे हार्डेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने सेट किया है एंड यू आर अपीयरिंग फॉर दैट. ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल कोई 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 15, 20, 25 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन पेपर में इजी मिलेंगे ही मिलेंगे. तो योर गोल शुड बी कि 30 मार्क्स 25 मार्क्स का जो भी आपको पेपर आ रहा है, स्टार्टिंग 1 hour में आप अच्छे से कंप्लीट करो. एंड यू गेट अश्योर्ड कि 30-35 मार्क्स मैंने बहुत अच्छे से लिखा है. इंस्टीट्यूट कितना भी टफ पेपर चेक करेगा ना, इसमें से मुझे एटलीस्ट 30 मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे आउट ऑफ 35. सो स्ट्रॉन्गेस्ट फुट फर्स्ट से यू विल गेट अ बेनिफिट. आपका स्टार्टिंग का 1 hour विल बी सुपर. स्टार्टिंग का 1 hour आपका अच्छा क्यों गया है? क्योंकि यू हैव सिलेक्टेड द इजी क्वेश्चंस. नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट 2 hours में सिलेक्ट आपका कोई भी मीडियम लेवल का कोई क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है, इसमें से आई एम नॉट श्योर, स्टिल यू ट्राई टू राइट एंड लास्ट का जो भी क्वेश्चन है, सपोज आपके 10-15 मार्क्स के आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, स्टिल नाउ यू विल गेट प्रॉपर टाइम टू थिंक. नहीं तो क्या होएगा इफ यू डोंट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने एक मेंशन किया कि सर वो पैनिक अटैक आता है एग्जामिनेशन में. अरे क्या पैनिक अटैक, ये क्या एज है क्या पैनिक अटैक आने का? सो पैनिक अटैक क्यों आएगा पता है? यू जस्ट थिंक अच्छा ये भी आ सकता है वो भी, और थिंकिंग में यू स्पेंड 1.5 hour. आधा टाइम चला गया. 1.5 hour में यू जस्ट मैनेज टू राइट 20 मार्क्स. नाउ यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. नाउ आपको बैलेंस 1.5 hour में 80 मार्क्स का पेपर लिखना है. So you will be able to manage to cover only 50-55 marks. Ultimately, you will not be able to clear also following this approach. So try to maintain जो questions आ रहे हैं फटाफट उसको अच्छे से ढूंढो, उसको मार्क करो, और जैसे ही आपको आंसर शीट हाथ में आती है, बिना इधर उधर देखे, आपके पास टाइम है ना, you have only 9 minutes for 5 to 6 marks question. आप उसको फटाफट लिखते चलो, जितना अच्छे से जो भी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. इजी क्वेश्चंस मे बी you are able to complete in 6 minutes, 7 minutes, you will be able to complete. If you do this, you will have a sufficient time to counter difficult question. अब talking about some practical subjects like costing,
accounts, even DT also. एग्जाम में ना हम लोग को यही समझ में नहीं आता, स्पेशली इन कॉस्टिंग, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कहां से करना है। वो स्टार्ट करने के अंदर आप फंस जाते हो उसके अंदर। एक क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करो, एक तो 1.5-2 पेज का क्वेश्चन होता है कॉस्टिंग का, इवन अकाउंट्स ऑल्सो, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। मैं पहला कैलसी पे कौन सा मैं आंसर शीट में कौन सा अकाउंट बनाऊं और कैलसी पे किसको किससे डिवाइड करूं तो मुझे बेसिक फिगर आएगा, सो दैट आई कैन स्टार्ट माय आंसर। यू डोंट नो दैट। द रीजन नॉट टू नो दैट इज यू लैक राइटिंग प्रैक्टिस। सो इन माय ओपिनियन, जब भी हम थियोरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई सॉल्व कर रहे हैं, लाइक अकाउंट्स, कॉस्टिंग, मेक श्योर you are solving something. How some students revise costing या accounts, they just do this tick method. अपनी बुक लेंगे जिसमें भी आपने प्रैक्टिस किया रहेगा क्लासेस एंड ऑल, उसमें यू विल फॉलो दिस टिक मेथड, जो भी फिगर्स आएंगे। हाँ, और जैसे ही हम लोग को कैलसी पे भी आपको कोई फिगर नहीं आ रहा है, यू विल रेफर द क्लास का सोल्यूशन शीट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इससे डिवाइड करना था। अब ये डिवाइड आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा। Go to the root of the problem. Why you were not be able to go to step number 2. Learn that, understand the concept and then try to solve again. So please make sure, जब भी हम लोग practical subjects practice कर रहे, make sure you are writing that practical subject. And yes, at least minimum आपको 2 mock test आपको लिखनी है, and mock test से you should learn from your mistake. ICAI also conducts mock test, so I'll recommend students to appear for that mock test, give that mock test. mock test में से जैसे ही पेपर चेक होके आता है, learn from your mistake कि भाई ये mock test में मैंने क्या गलत लिखा और मेरे मार्क्स क्यों गए। जितना आप टेस्ट लिखोगे ना, विजय सर के लेक्चर में some students were asking कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं, we are getting stress while writing the answer. In my opinion, the primary reason for such thing is lack of test writing. आप पहले अगर वो स्ट्रेस से नहीं गुजरे हो ना, and first time you are facing in the examination hall writing the test, it will be very difficult for you. Or coming to this attempt, मई में एग्जाम होती है, superb summers, and if you some of the students staying in Mumbai, हम लोग का ऐसा पसीना पेपर पे गिरता है, आंसर शीट पे। सो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग एग्जाम का पेपर लिखने जा रहे हैं, और दिस इज ऑल ड्यू टू स्ट्रेस, जो भी पेपर राइटिंग में हम लोग को इश्यूज आ रहे, मेक श्योर यू राइट 1 मॉक टेस्ट इन सिमिलर सिचुएशन, जहां पे पंखा वगैरह थोड़ा कम चालू है और वो सिचुएशन में आप पेपर लिखो। वी आर ब्लेस्ड, जैसे हम लोग को कोई मॉक टेस्ट आता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स में भी परचेजिंग सम मॉक टेस्ट ऑनलाइन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू इंस्टीट्यूट एंड राइट वेरी गुड। वो एसी वाला कॉन्सेप्ट आपका होना नहीं चाहिए, एसी हॉल में बैठे और मस्त मॉक टेस्ट लिख रहे। मई में आपकी एग्जाम होने वाली है और सब पसीने में आपको पेपर लिखना है। एवरी सेंटर विल नॉट हैव दैट फैसिलिटी की सुपर ऑसम फैन वगैरह चल, ठीक है फैन रहेगा लेकिन स्टिल गर्मी एक्सट्रीम लेवल का रहेगा। सो मेक श्योर आप वो भी चीज का एक राइटिंग प्रैक्टिस रखो उस एनवायरमेंट में। हाँ, अब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मेरा, because the first topic is over, what mindset you have to make. Second, I am trying to cover this topic is dealing with the mental blocks and panic attack which students generally suffer during the examination. What ICAI does, कभी कभी कोई पेपर में कैसे करते हैं वो लोग, क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट डाल दिया, ठीक है, या पेपर सेटिंग में भी हैविंग अ डिफरेंट टेक्निक। पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए व्हाट इंस्टीट्यूट डज, क्वेश्चन नंबर 2 डिफिकल्ट डाला, 2 का सब क्वेश्चन 3 डिफिकल्ट डाला, कोई बीच में से और क्वेश्चन एक दो डिफिकल्ट डाले। पेपर डिफिकल्ट नहीं है, देयर आर सर्टेन 3 to 4 क्वेश्चंस व्हिच आर मेकिंग योर परसेप्शन रिलेटेड टू पेपर डिफिकल्ट। सो अगेन मैं पहले ही इस पे जाऊंगा
कि start searching for the easy questions from the question paper and try to solve that. So कभी भी नहीं होएगा इंस्टीट्यूट में ऐसा कि भाई नहीं 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 बाप रे बाप पूरा पेपर डिफिकल्ट है. नो 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 नॉट एट ऑल. आपके क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी मेनी इजी क्वेश्चन. ढूंढो, लिखो, स्टार्टिंग का 1 आवर एकदम सुपर ऑसम करो, देन मूव फॉरवर्ड. देन अगेन कमिंग टू सेकंड, ये चीज आई यूज्ड टू डू. क्वेश्चन पेपर होता था, वो क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में ही रख के आता था. उसमें मैंने मार्किंग क्यों होती थी, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि अगर हम लोग घर पे लेके जाएंगे वो क्वेश्चन पेपर, तो फिर हम लोग स्टार्टिंग का 1 आवर डिस्कस करेंगे. अच्छा ये क्वेश्चन था, फिर यू विल टेक दैट मॉड्यूल. अरे भाई कल डीटी का पेपर है और आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, आपने सही लिखा है कि नहीं, और चलो देख लिया आपने, आपका आंसर गलत हुआ, विच में हैपन, आपका आंसर गलत हुआ, तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर डीटी you will be doing some shok sabha related to wrong questions which you have written in your paper. So never discuss after exam. Best way. और होते हैं ना हम लोग के फ्रेंड्स होते हैं, अरे तूने क्या लिखा, अवॉइड वो सिचुएशन से ना विद इन सेकेंड्स आपने बाहर निकल जाने का. you will not discuss the paper. हाँ आपको चाहिए ना, इफ you love to discuss paper, पूरा क्वेश्चन पेपर जमा करो, आप कॉपी बनाओ, जैसा ही लास्ट पेपर आपका खत्म होता है, मस्त बैठो सारे पेपर्स लेके, सब दोस्तों को बुलाओ, कोई कैफे पे बैठो, कैफे पे सब लोग अपना अपना पेपर लेके आओ, और वहां पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर आपके आगे के पेपर को फर्क नहीं पड़ेगा. सो प्लीज मेक श्योर यू विल नेवर डिस्कस पेपर्स आफ्टर एग्जाम. ये आप लिख लो किधर, क्योंकि हम लोग कितना भी बोलते हैं ना, और पहले तो ये तो समझो जिससे आप डिस्कस कर रहे हो उसका राइट है क्या. ये चीज हम लोग को सबसे पहले समझनी चाहिए. फिर मुझे पता है ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं बोलूंगा, अवॉइड यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल. वो क्या होता है, मैं हमेशा ये स्लाइड पे ज्यादा ये पॉइंट पे ज्यादा इंसिस्ट करता हूं. हम लोग का मन कभी ना कभी भटक जाता है कोई भी कारण से. अरे स्पेशली रिलेटेड टू थियोरी सब्जेक्ट्स, इवन कॉस्टिंग ऑल्सो. मेनी स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, तो एक काम करते किधर लिख के जाते हैं. अरे भाई कॉन्सिक्वेंस आर very very severe. You have reached at the inter level, yeah, you have appearing for CA foundation, you have a consequence, institute may ban you for 1 to 3 years not to give exam. So then you have only one option to change the career option, जिसका आपने इतना मेहनत किया, now you have to change the career option. So कभी भी ये थॉट आता है ना दिमाग में, अनफेयर मीन्स, मेरा ये वाला लेक्चर आप याद कर रहा, भले 2-5 मार्क्स कम आए, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट आप पास तो हो जाओगे. So please avoid using unfair means. This I have already discussed. This is very important thing. Many students MCQ वो लोग मेन आंसर शीट में लिख देते हैं. प्लीज MCQ के लिए you will be getting a different OMR sheet. और सुनो इसमें भी बच्चे लोग MCQ है ना टिक कर देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में. ए MCQ का आंसर ABCDE है, and forget to punch the answers in their OMR sheet. This is a basic common mistake. और OMR sheet में what I generally tell students, always carry a scale. जहां पे 1 का आंसर 1 में ही लिखोगे, 2 का आंसर 2 में ही लिखोगे, 3 का आंसर 3 में ही लिखोगे. फाउंडेशन में भी सब लोग करते हैं, जो लोग इंटर में रहते हैं, यू मस्ट हैव डन इन CA फाउंडेशन, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम CA फाउंडेशन, मेक श्योर एक स्केल लेके जाओ, स्केल रखो 1 के सामने, आप 1 का ही ABCD जो भी ऑप्शन रहेंगे आप टिक कर रहे हो, 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो मेक श्योर आपकी OMR शीट आर प्रॉपरली सर्कल्ड. आप इंटर के हम लोग पेपर्स लिखते हैं, इंटर में की टू गेट अ गुड स्कोर, जैसे as Jahanvi was sharing कि she scored very well in MCQs. So it is quite correct. If you want to score very good,
you have to make sure your MCQs are top notch. आराम से टाइम लेके आप MCQ आप सॉल्व करो. टाइम मतलब अपना टाइम का रूल वही है जितना आपको स्पेंड करना है. बट मेक श्योर MCQs आपके करेक्ट हो. एंड वन मोर थिंग टू शेयर, नो डाउट आप बहुत सारे MCQs आप अपियर करते हो आपके क्लासेस के या जो भी इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं. इंस्टीट्यूट हैज गिवन अ वेरी गुड ऑप्शन. एक सेकेंड, लाइक टू शेयर. If you go to the website, I hope many students would be knowing this option. If you go to the website of institute, knowledge portal mein, if you go, if you enter your WRO number, this is my WRO number. इंस्टीट्यूट अभी भी मेरे को सीए फाउंडेशन में दिखा रहा है इंस्टीट्यूट का डेटाबेस. If you go to this, there is a, I hope you are able to see this MCQ paper practice. If you go, this is for foundation, same is for inter also, same is for final also. हम लोग का कभी भी हम लोग कोई एक चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से. You have an option. There are so many questions you can appear from here. So if you are done with your classes के MCQ, but चलो वो done भी नहीं है. I will recommend each and every student to go to the database of institute and solve this MCQ. You'll be very happy in the after examination. अरे यार अच्छा हुआ यार वो institute के सब question solve किए. सारे papers आप मिलाओगे, maybe 10 marks के MCQs उस database में से आते हैं, तो all our efforts will be paid off if you try to solve this MCQs. ठीक है. Next, I'll be discussing some practical tips and suggestion while writing the paper. Very important, very important. Always new question, new page. और पेज नंबर का भी आप हेडिंग कैसे देते हो? जैसे आप हम लोग के पास में, I'll show you one paper. We will discuss also ये वाले पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको. New question, new paper. जैसे to be on a safer side, यहाँ पे भी आप नंबरिंग दे दो. बेटर है if you give the numbering in center. अब देखो this student has scored this is a paper of a all India ranker student. He has scored very good marks. ये तो उसके theory के marks है. MCQ में almost he has scored full marks. So I'm sharing this answer sheet. So question number आप दोगे and you will write this answer. Pattern पे I'll come later कैसे. So make sure you are numbering. ठीक है. And न्यू क्वेश्चन न्यू पेज. इवन देखो उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है यहाँ पे, तो ठीक है जगह नहीं था. एक सेकेंड. See what he has done. Question number 3A he appeared. ठीक है. Appeared and it is over. Many students what they do, they'll immediately start here question number 3B. I will not recommend. Please. अगर आपका यहाँ पे खत्म होता है, make sure you start a new question with the new page. It will make your answer sheet a presentable. Examiner will know कि अच्छा चलो भाई ये इसका तो एक सही है कि यहाँ पे इसने खत्म किया है, तो अभी कोई ये दूसरा क्वेश्चन ही रहेगा. So please keep a note of that. कि you will always start a new question with a new page. And I already told you कि accounts, costing, even theory subjects. You see this. This is a theory subject ka paper. Institute is doing stepwise marking. Institute is doing a stepwise marking. So tension नहीं लेने का.
आपने प्रोविजन में कुछ 2-3 लाइंस कम लिखी क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी कम है, आपको आगे के भी क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है, वहां पे थोड़े मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन यू ट्राई टू राइट डाउन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन सो दैट यू आर एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, बिकॉज आंसर प्रोविजन करेक्ट कंक्लूजन पे आंसर नहीं होते, प्रोविजन लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, कंबाइंड each प्रोविजन में भी इफ they are searching for some keywords, देखो when you write the paper, जो भी एग्जामिनर होता है he's wants some keywords in your answer. So while writing the paper you have two options, either you do such boxes, जिसके लिए चलो मैं अग्री करता हूं आपके पास में टाइम नहीं है, you at least underline the keywords so that paper checker when he's checking the paper he'll not read all your answer stuff, he just wants कि quorum कितना होना चाहिए, and mainly what is in the final answer conclusion में please make sure, especially in theory subjects, while you write the conclusion make sure question में जैसा पूछा है ना वैसा ही conclusion लिखेंगे, question में पूछा है is Mr. Rai liable or not liable, तो वैसे ही words हम लोग use करेंगे. Then moving forward, जिसे I have already told, underline important points, section, final conclusion, presentation पे I'll last का 1-2 minutes I'll spend on the paper discussion. Generally institute question number 1 difficult पूछता है, and in between some questions may be tricky, तो ये मेरी लाइन है ना, आप रट्टा मार लो, पेपर लिख रहे हो, पेपर लिखते टाइम डरना मना है, बिल्कुल मना है डरना, आपको पूरा पेपर अच्छे से लिखना है, चलो पूरा पेपर अच्छे से नहीं लिख रहे हो, मैं भी अग्री करता हूं कि देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सीन द फर्स्ट टाइम, ऐसा अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट आ गया बुक में, चिल, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो हमको अच्छे से आते हैं, जैसे जैसे आप अच्छे क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करते चलोगे, यू विल बिल्ड अ फ्लो एंड अल्टीमेटली you will be able to attempt almost पूरा 95-100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके निकलोगे, उसमें से चलो अग्री करते हैं कि 15 मार्क्स का आपने ठीक ठाक लिखा है, एटलीस्ट बाकी का पेपर आपने अच्छे से लिखा है. दिस आई हैव डिस्कस नाउ एमसीक्यू के, देखो अभी ये पॉइंट पे आई डिस्कस, यू हैव टू डू ऑल द मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज पिछले 2-3-4 अटेम्प्ट के, यस यू हैव टू डू. There are various compilers available in the market. If you have joined some classes also provides you such type of compiler, जहाँ पे वो लोग सारे questions unit wise arrange करके देते हैं. Theory subject, practical subject, unit wise each and every questions of institutes, RTP, institutes, MTP are covered with you. So make sure if you are not having such material, you should have such material and you should try to solve from the mock test papers and revision test papers provided by the institute. And one very important thing while studying, देखो सबसे पहले तो ऐसा कुछ है नहीं इंस्टीट्यूट में, ये पिछले 3 अटेम्प्ट में नहीं पूछा है तो ये भी नहीं पूछेंगे, नो 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 नो, सिलेबस में कुछ भी पूछ सकते हैं भाई इंस्टीट्यूट. आई शो यू वन थिंग, इन नवंबर 22 पेपर, एक सेकेंड, नवंबर 2022 पेपर, अभी कोई इंटर का स्टूडेंट रहेगा उसको ये प्रोविजन पता रहे नहीं पता रहेगी तो प्लीज डोंट फील स्ट्रेस, प्रॉस्पेक्टस चैप्टर में घर पे जाके पढ़ लेना, आई जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. क्यों हम लोग कोई चीज ऑप्शन में नहीं निकालते. और एक चीज है, मॉड्यूल अपना भगवान है, मॉड्यूल का कंटेंट, मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं इंस्टीट्यूट उस पे एज इट इज क्वेश्चंस पूछता है, एज इट इज, मतलब कोई अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा तो समझ जाने का इंस्टीट्यूट के कोई एग्जांपल्स का क्वेश्चन है. तो देयर इज अ प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट जहां पे ये उन्होंने पूछा है 181C का. अब ये 181C का लिमिट पूरे ये चैप्टर में किधर भी नहीं दिया हुआ है. इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 में इस लिमिट पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन. अब जो बच्चों ने वो क्वेश्चन देखा उनको उधर ही पैनिक अटैक, और ये 6 मार्क्स का नहीं आ रहा है, अरे वो 6 मार्क्स का भले ही नहीं आ रहा है,
बाकी के 94 मार्क्स से क्वेश्चन पड़े, ढूंढो उसमें से, इसको लास्ट में देखो। सो प्लीज मेक श्योर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आप चाहिए तो कोई भी रेफर करो आपके क्लासेस के स्टडी मटेरियल, इफ यू आर ओके विद इट। मेक श्योर इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है उसमें, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के एग्जाम्पल्स कवर्ड है उसमें। इफ यस देन इट इज फाइन, इफ नो देन मेक श्योर एक बार आप मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। एंड while writing, while reading, what I used to do, and I recommend students also to make such thing, strong average weak का एक concept है। Suppose I am studying DT, और DT में I'm not that good with capital gain, so I'll keep my capital gain in weaker section, and I'm okay with the PGBP, and I'm very good with salary and house property, I'll put it in strong। अब ये strong average weak कब निकालोगे आप? जब आपने कोई टेस्ट लिखी रहेगी, आपके पास में उसका असेसमेंट रहेगा, या फिर you are able to solve these questions very easily with respect to salary and house property। So make that ratings, and जब आप रिविजन करोगे ना, तो go with this। ऐसा नहीं कि जो सीक्वेंस है, सैलरी सीक्वेंस पहले तो सैलरी पढ़ूंगा, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, नो, यू विल रीड द वीकेस्ट वाला सबसे पहले। मेक योर वीक एवरेज, मेक योर एवरेज स्ट्रॉन्ग until your exam come, then I'll give some practical tips। कुछ टिप्स तो ऐसी है कि बोले अरे सर क्या बोल रहे हो यार, बट हाँ करो, चुपचाप फॉलो प्लीज। जैसे ऑलवेज कैरी 2 कैलकुलेटर्स इन एग्जाम। I have seen, I was appearing, I used to carry 2 calci। I was appearing for costing paper, और मेरे आगे मतलब बाजू की रो में आगे में एक बंदा था, उसका कैल्सी गिर गया। अब वो हम लोग के टाइम पे CT 500 कैल्सी आता था, वो गिर गया तो उसके सब बटन इधर उधर फैल गए, मतलब वो कैल्सी वाज नॉट वर्किंग। अब इमेजिन कॉस्टिंग का पेपर विदाउट कैल्सी, तो कॉस्टिंग का पेपर विदाउट कैल्सी, सी यू इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो अभी आई हैड, सो आई गेव हिम माइन, और उसको कंडीशन बोल के दिया मैंने, भाई प्लीज अगर मेरा कैल्सी बंद होएगा तो मैं तेरे से वापस ले लूंगा, मैं तुझे दे रहा हूं मतलब ये तेरा नहीं है। तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज कैरी 2 कैलकुलेटर्स इन एग्जाम। एंड थोड़ा वियर्ड टिप है, बट यस, अवॉइड ईटिंग जंक ऑन द एग्जाम डे। वो होता है पैनिक होता है ना, तो यू क्रेव फॉर मोर शुगर, पैनिक होता है तो यू क्रेव फॉर मोर ऑयली जंक, पिज्जा, बर्गर, सब, तो सब मन को शांति मिलती है। तो प्लीज ये याद करना, जितना आप जंक खाओगे, मतलब ये एग्जाम डे भी क्यों भाई, पूरा एग्जाम तक अवॉइड ईटिंग जंक। ठीक है कभी कभार खाया ठीक है, बट अवॉइड ईटिंग जंक। आपके बॉडी का जो फंक्शनिंग है, इट विल बी मच 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 बेटर, यू विल बी मोर एफिशिएंट इन राइटिंग पेपर, in dealing with some tricky situation। So yes, avoid eating junk। तो फिर क्या खाने का, अब देखो सबका अलग अलग चॉइस होता है। जंक छोड़ दो भाई, दाल चावल सब्जी रोटी सबसे बेस्ट, वो खाओ, सैलेड्स अच्छा खाओ। एंड दो स्टूडेंट्स अपियरिंग इन मे, बहुत गर्मी रहेगी, स्टे हाइड्रेटेड। एंड आई विल गिव यू अ वेरी वेरी सुपर्ब हैक। मॉर्निंग में देखो, ऐसा नहीं है आप जब पढ़ाई करते हो तब करो, कोई रात के राजा होते हैं, कोई सवेरे के राजा होते हैं, इट इज ओके व्हेन यू आर स्टडिंग विद। लेकिन द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप, यू रिक्वायर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप। वो उतना प्लीज सोना चाहिए। कभी कभार ठीक है 5 घंटे सो लिए, इट्स ओके। 5 6 7 आवर्स का स्लीप आपका दिमाग बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। whenever you wake up, take 2 pinch of salt in your water। लेमन, आधा लेमन या पूरा लेमन ले लो, बिना शुगर डाले। इफ यू वांट सम टेस्ट, ऐड अ बिट हनी, बट दैट सॉल्ट इज मस्ट, 2 pinch of salt। इट विल मेक योर बॉडी सुपर एक्टिव विद इन 10 minutes। मतलब मैं तो ये डेली फॉलो करता हूँ। इट इज अ सुपर हैक to make yourself supercharged in the morning, so you are able to start your studies very as early as possible। Stay hydrated,
take care yourself properly and please make sure you are not allowed to fall ill. बीमार पड़ गए, बीमारी में पढ़ाई नहीं होएगी, 10 दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, 10 दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, उससे बेटर है मैं पानी अच्छे से पीऊंगा और हेल्दी खाऊंगा. प्लीज मेक श्योर यू फॉलो दिस इज. ये लगता रहेगा ना बच्चों को कि अरे सर ये क्या ही बोल रहे हैं. अरे भाई, आई हैव सीन मेनी गुड स्टूडेंट्स स्पॉइलिंग देयर 7 days by falling ill. अब ऑब्वियसली आप बीमार पड़ रहे हो बिकॉज आप बेसिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो. बेसिक रूल्स इज टू गेट 6-7 hours का स्लीप एंड टू गेट अ गुड फूड. गुड फूड के डेफिनेशन में देयर इज नो जंक. ये आप फॉलो करो, देयर इज अ रेयर चांस यू विल फॉल इल. हाँ, एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू गो आउटसाइड, कभी होता है अभी हम लोग कभी बाहर गए तो कैरी वाटर फ्रॉम योर होम एंड इफ पॉसिबल बॉइल्ड वाटर कैरी किया करो. या अगर आप बाहर गए, घर का पानी ही नहीं है, मेक श्योर यू ड्रिंक सम बॉटल्ड वाटर टिल एग्जाम. बाद में तो ठीक है, चलता है जो चाहिए हो. टेक प्रॉपर स्लीप. ठीक है, आई विल डिस्कस सम सर्टिफाइड कॉपीज विथ यू जस्ट इन अ ब्रीफ. सबसे एक पहला क्वेश्चन बच्चों से आएगा, मुझे पता है. मैं पहले ही क्वेश्चन रेस कर देता हूं. सर, सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या? ये एक एकदम बर्निंग क्वेश्चन होता है. सर, सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या? अब दिस पेपर इज ऑफ ऑल इंडिया रैंकर. ठीक है, पूरे पेपर में गिन के भाई साहब ने एक ही सेक्शन लिखा है. एक ही सेक्शन ही मैनेज टू स्कोर अराउंड समथिंग अराउंड 80 marks का कुछ उसने पूरे पेपर में. इफ आई विल शो यू द होल पेपर, पूरे पेपर में उसने एक ही सेक्शन लिखा हुआ है. Section is not that important. Obviously, it gives a outstanding impression to examiner when he is checking the paper, but section is not that important. Even one more paper is there. ये भी एक CA इंटर का स्टूडेंट का पेपर है. देखो, this type of presentation I am telling you. When you write the answer, make sure आप उसको एक्सप्लेन करो. एक आध सेक्शन किधर तो कोट किया है इसने, बाकी पूरे पेपर में इसने किधर भी सेक्शन ही नहीं लिखा है. You make the provision point wise rather than paragraph wise. You underline the important keywords and underline the final conclusion. ठीक है, provision आपने facts नहीं लिखा तो चलता है. At least what is required in your answer theory paper is the provision and conclusion what they are asking. You may have saw that they are giving stepwise marking. So yes, it is there. And one more question. Some students may ask, sir, conclusion गलत है, provision सही है. तो yes, you are eligible for 1.5 marks. Dite Institute gives you marks if you have written a correct provision, though your conclusion is wrong. But nahi, not more than 1.5 max. Yes, I will let up to students. हाँ, I'll share 1, 2 or 3 things. उसके बाद आप queries raise करना. Module reading is must. I will recommend students, जैसे 1.5 दिन में मॉड्यूल हम लोग पूरा रिवाइज नहीं कर सकते. So make sure, especially related to theory subjects, especially related to law and audit, even for all subjects, you make your own summary notes. Everyone has a different criteria. मेरी summary notes आपको नहीं चलेगी, आपकी summary notes मुझे नहीं चलेगी. You make your summary notes कि मुझे कौन से questions, कौन से concepts मुझे अच्छे से देखने, जो चीज आप strong नहीं हो, make sure you note down that. And one more thing, आप जो भी compiler read करते हो, जहां पे previous years paper, mock test papers होते हैं, make sure उसमें से कोई difficult question था जो आपको नहीं जमा सही से सॉल्व करते हुए, आप वहां पे एक स्टिकी नोट लगा दो. आप जब भी रिवीजन करोगे, वो इजी वाले जो क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी आ रहे हैं, आप वो रिवाइज नहीं करोगे, आप वो स्टिकी नोट वाले क्वेश्चन रिवाइज करोगे. एंड some students may have called for certified copy. I hope इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया रहेगा, उनका नेगेटिव रिजल्ट आया रहेगा, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज ऑर्डर की रहेगी. सर्टिफाइड कॉपी आने के बाद कंपेयर योर आंसर विद इंस्टीट्यूट सजेस्टेड एंड राइट अ फुल पेज
लिखो, आप लिखो कि क्या इंस्टीट्यूट को, आपको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में लिखो, क्या इंस्टीट्यूट को चाहिए था और मेरे आंसर में क्या मिसिंग है। ये अगर आपने पूरा लिख लिया ना, आपका आधा बैटल यू हैव ऑलरेडी वॉन। जस्ट नाउ यू हैव टू फोकस कि भाई क्या चीज आपने मिस किया, स्पेशली रिलेटेड टू ऑडिट। ऑडिट में बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर लिखा तो सब था, मार्क्स ही नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने। अरे इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए क्योंकि उनको जैसा चाहिए वैसा आपने लिखा। जैसे आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी है ना, यू मेक कंपैरिजन वेर यू आर लैकिंग। That's it. If you have any other question, let me know. My contact number is this. You can WhatsApp me. Maybe in an hour, 2, 3, 4 hours. जैसे मुझे I'll get a time. I'll solve each and every student's query. Just mention that you are from this seminar so that I'll be able to recollect. Yes, over to you, WIRC, Vikasa. Yes, sir. We have few queries from the physical attendees here. The first question being, what are the common mistakes students make that lead to the loss of marks? Yes. One major mistakes, you make your answer lengthy by writing unnecessary stuffs, which examiner will not have enough time to check your paper. जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखो। देखो क्वेश्चन में जो पूछा है या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया वो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन आ रहा है मेक श्योर आप उसको प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखो। प्रिसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर रहे। So maximum students who lose their marks is by writing some unnecessary stuffs. And one more thing, both in practical and theory subject, another reason for losing marks is they are not able to complete their 100 marks paper. So this both thing each and every student must keep in mind. All right, sir. Another question being, any one thing that instantly makes an answer stand out? Yes, I'll show you in that presentation also. This makes your answer stand up. कोई भी मतलब this paper is of a non-ranker student. This paper is of a ranker student. Both have almost scored same marks. So to make the paper outstanding, present your paper in a decent manner. Costing, accounts, law is in front of you. Even I have some strategic management paper also. ठीक है, I am short of time, so just make sure provision you write. आपने भले ही पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, एग्जामिनर वांट इंपॉर्टेंट थिंग्स, make sure you underline the things, so it will be very easy for him to check your paper. The more easy for him, the more marks you get. Lastly, what advice will you give to students aiming for an exemption or a rank? Yes, if you are aiming for exemption, if you are aiming for rank, make your paper very neat. सबसे पहले वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। इवन दो स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर रैंक, सब क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग, वी नो ईच एंड एवरी। सो मेक श्योर जो क्वेश्चन आपको 100% अच्छे से आ रहे हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आप उसको लिखो। जब भी आप स्टार्टिंग बहुत अच्छा करते हो ना, एग्जामिनर है स्टार्टिंग से माइंडसेट कि नहीं दिस पेपर इज ऑफ अ गुड लेवल, आई विल चेक इट वेरी प्रॉपरली। सो स्टार्टिंग उसके लिए अच्छी होनी चाहिए पेपर्स की। And avoid, if you are aiming for exemption and rank, please avoid overwriting and cutting. All right, sir. And what an incredible session we have just witnessed. A huge thank you to CA Bhushan Gosar for sharing his deep knowledge, practical wisdom, and truly inspiring words with all of us today. Your tips on paper writing were nothing short of eye-opening. Writing exam is an art, and we are all ready to be artists for it. On behalf of everyone present, thank you once again for your time, your insights, and for making learning such a powerful and enjoyable experience. We are truly grateful to have had you with us. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. So next, we are thrilled to hear from someone who has been a true beacon for the guidance for many in CA community. CA Bhargav Shankarwala, the chairperson of Bhuj branch.
Please welcome CA Bhargav Shankarwala sir. Thank you, both MOCs. Thank you, CA Bhushan Gosar. You have given very good guidance. हम सभी ने अपने विद्यार्थी काल में बहुत अच्छी मेहनत की होगी या तो भी कर रहे होंगे, लेकिन 6 महीनों की सातत्य रूप की तैयारी का मूल्यांकन परीक्षा के 3 घंटों में ही होता है। वह 3 घंटे में जो विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने के साथ परीक्षा वही में लेखांकन करता है, वह विद्यार्थी अपने परिणाम के दिन सक्सेसफुल ये शब्द देख सकता है। लेखांकन के लिए आप सभी के आईसीआई की नजदीकी शाखा या ब्रांच में मॉक टेस्ट पेपर ली जाती होगी, तो उसमें आप अपनी पूर्व तैयारी के भाग के रूप में दे दीजिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी लिखने की गति कितनी है। 3 घंटे में आप पूरा पेपर दे पाते हैं या नहीं, इससे आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो सकता है। मेरा अंगत अनुभव मैं थोड़ा सा साझा करना चाहूंगा। हो सके तो आप अपनी सभी जितना सवेरे के समय में जल्दी उठ के जहाँ कुदरती हवा का स्पर्श आपको सीधा हो, ऐसी जगह पे बैठ के अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपका जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो नॉर्मल लेवल से 2 या 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और आपकी याद शक्ति भी काफी बढ़ेगी। थोड़े से कोट में कहूंगा, पहले मैं सुनता था नॉलेज इज पावर, उसके बाद मैंने अनुभव किया नॉलेज तो है लेकिन अगर उसको अप्लाइड नहीं किया तो वो पावर नहीं है, मीन्स अप्लाइड नॉलेज इज पावर। उसके बाद आज का सेशन मैं भी फुल अटेंड किया ब्रांच में बैठ के, तो उससे ये मुझे पता चला रिटर्न कम अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यहाँ मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की एक बात जो मैंने ध्यान रखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी युद्ध जीतना है तो संख्या बल से ज्यादा मनोबल ज्यादा महत्व रखता है। हमारे पास संख्या काफी हो लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रेन ना किया हो या उसको प्रॉपर गाइडेंस ना दिया हो तो फिर वो पूरा जीतते जीतते भी हार जाता है। तो बस सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आज जो भी आपको WRC और विकासा की टीम की तरफ से आपको जो बताया गया उसको ध्यान में रखें। परीक्षा में जब जाए तब अपने अपने इष्ट को याद करें, माता पिता के पैर छू के जाए, किसी से कोई भी उग्र वार्तालाप बिल्कुल ना करें, स्वस्थ रहें और अच्छे सुवाच्य अक्षरों में परीक्षा के उत्तर लिखें और परिणाम के दिन सक्सेसफुल लिखा है ऐसी मेहनत करें। जय हिंद, जय ICAI। Thank you so much, Bhargav sir, for your valuable time and efforts for this session. You just mentioned that you sat through the whole session, and that is really a great motivating factor as you are always ready to learn, and everything that you do for students really shines through. Thank you so much, sir. It's our pleasure. So, as we wrap up today's incredible seminar, I would like to invite WICASA committee member Bhavesh Mehta to deliver a vote of thanks. Thank you, Krish. A very good evening to all the dignitaries on the dais and my fellow WICASA buddies. I, Bhavesh Mehta, feel extremely honored to extend my heartfelt appreciation and thank each one of you for being a part of today's seminar, webinar, How to Ace CA Exams. I sincerely hope today's session has been insightful, thought-provoking, and has added significant value to your exam planning strategies. May it help you navigate your journey ahead with clarity and confidence. I would like to express my sincere gratitude to our speakers, Ms. Jahanvi Mehta, CA Prasanna Surana, CA Vijay Thakkar sir, and CA Bhushan Gosar sir, for sharing their valuable time and enlightening us with practical tips, motivation, and effective writing strategies to ace our exams like a pro. I would further like to extend my thanks to our WICASA chairpersons from various branches for their support and contribution in making this event a success. CA Shikha Agarwal, WICASA chairperson, Ahmedabad branch.
CA Jignesh Manra, Vikasa Chairperson, Bhavnagar Branch. CA Pradnya Bam, Vikasa Chairperson, Pune Branch. CA Vinod Agarwal, Vikasa Chairperson, Nagpur Branch. CA Mahamadriv Menon, CA Vikasa Chairperson, Bhuj Branch. And CA Vijay Kalani sir, Vikasa Chairperson, Nanded Branch. CA Bhargav Shankarwala sir, Chairman, Vikasa Bhuj, WIRC Bhuj Branch. A huge thanks to our WIRC team, WIRC Chairman CA Ketan Sahiya sir and his team, CA Piyush Chandak sir, CA Fenil Shah sir, and CA Jinal Savla ma'am for their valuable guidance and encouragement in organizing this event. Last but not the least, I'd like to thank my Vikasa team, CA Jitendra Saglani sir, and my super energizing Vikasa team for having such a great seminar cum webinar in which we were able to interact and provide valuable tips to all the students appearing for this event. A huge thanks to our audience. Without you, this event was nothing, and your presence has made this event more valuable. Wishing you all the very best for your upcoming examinations. As we wrap up today's event, remember, this might be the end of the evening, but not the end of the journey. Keep striving, keep growing, and aim higher each day. Thank you. Thank you, Bhavesh. And with that, we bring today's seminar to a close. Remember that CA journey is not just about passing exams. It's about becoming a professional with high values and integrity. Go forward with focus, confidence, and the mindset of an achiever. Thank you once again and see you at the top. Thank you so much.